नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शाश्वत सनातन पर। दोस्तों, आज हम व्हेन शिवा मेट्स जूंग का कंक्लूजन एपिसोड कर रहे हैं। इसमें सारे डॉट्स कनेक्ट कर देंगे और किस तरह से जुंग ने अपने साइको एनालिसिस में भगवान महादेव, परमेश्वर शिव को जो है अपना लिया था, या उनकी सारी की सारी मान्यताओं के हिसाब से उसके रिसर्च ने वहीं पर जाकर अपनी जो है गंतव्य को प्राप्त किया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पिछले एपिसोड की आपको रिकैप में भी बताएँगे और उसके बाद फिर आज का एपिसोड शुरू करेंगे। आप सबकी शिकायत रहती है कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम जो है आज अधिकतर जो भाग है उसको हिंदी में ही आपके समक्ष एक्सप्लेन करेंगे। अद्वैत जी केवल इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन उसका विस्तार से पूरा का पूरा जो अनुवाद या संबोधन है, मैं हिंदी में आप सबके समक्ष बड़ी ही सरल भाषा में करूँगा। बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अद्वैत जी को अपने साथ ले लेता हूँ। अद्वैत जी, स्वागत है आपका। अद्वैत जी, आप हैं? अ, अद्वैत जी शायद म्यूट हैं, तो दर्शकों मैं जल्दी से हाँ, आप सबके कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जो है अद्वैत जी आई एम हियर, यू आपका स्वागत टेक है द अद्वैत कमेंट्स। जी। हम जो है जी, 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 जी। मैं कमेंट्स ले लेता हूँ, उसके बाद फिर रिकैप करूँगा और फिर अद्वैत जी आप शुरू करिएगा। ठीक है? पिछले एपिसोड को थोड़ा विस्तार में जो है रखेंगे दर्शकों के सामने हिंदी में। यस। जी, हमारे साथ पहाड़ सिंह जी जुड़े हुए हैं। गुरुदेव प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वागत है पहाड़ सिंह जी आपका। प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको परमात्मा अपने आशीर्वाद से सदैव पोषित करे, यही कामना करूँगा मैं आपके लिए। हमारे साथ बिल्लू रॉय जी जुड़े हुए हैं। द्रौपदी काली होने के वजह से भी द्रौपदी को के हस्बैंड बोला गया है कि जबकि इस्लाम में काला गोरा भेदभाव है। द्रौपदी काली होने की बावजूद भी बिल्लू राय जी, बिल्कुल सही है। ये मुझे लगता है ये ऑब्जर्वेशन उतना, वो उनका रंग सांवला था द्रौपदी का, लेकिन वो खूबसूरत थी। सांवले रंग की वजह बहुत सारे हमारे इतिहास में ऐसे जो किरदार हुए हैं, इतिहास में ऐसे पात्र हुए हैं जो सांवले थे, लेकिन वो सुंदरता में उनका वर्णन बहुत ही अधिक उच्चतम श्रेणी का किया गया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बिल्लू राय जी हमारे साथ हैं। उन्होंने अद्वैत जी आज अद्वैत जी, मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप अपने कमेंट्स में अगर आप वॉइस में कोई बाधा आ रही है तो आप बता सकते हैं। रूप DS5 जी ने बोला है, भूप जी वर्सेस ऑल ऑन न्यूयॉर्क टॉपिक, ही से दिस इज IVF ओनली। यस, मैं इस बात को ओन करता हूँ और इसको कई बार प्रूव कर चुका हूँ कि नियोग प्योरली IVF की टेक्नोलॉजी है। नियोग में IVF की ही प्रैक्टिस होती रही है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृपी, अगस्त्य मुनि,
वेद व्यास का, इन सब का जन्म, महाभारत में कौरवों और पांडवों का जन्म, ये टोटल आईवीएफ की 3 प्रकार से आईवीएफ का जो सिस्टम है, या तो स्टेम सेल से, या टेस्ट ट्यूब बेबीज से, या फिर जो है भ्रूण स्थानांतरित करके या क्लोनिंग करके जो संतान उत्पन्न किए जाते हैं, ये केवल और केवल उसका ही वर्णन है, और ये हमारे सनातन धर्म में इसकी भरमार है। तो आप इसको सी अनदर वे। नयन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्री राम भाई बोला है नयन सिंह जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे साथ अरिजीत दास जी हैं। हेलो अद्वैत जी, भूप जी, बिल्कुल हेलो अद्वैत जी, आपको भी हेलो बोला है, इनको अभिनंदन करें। स्वागत है अरिजीत दास जी आपका। निपुण जी हमारे हेलो साथ जुड़े हुए हैं। हेलो भूप जी, हेलो अद्वैत जी निपुण एंड जी। एवरीवन। जी जी, निपुण जी ने भी हेलो बोला है। नमस्ते, स्वागत है निपुण जी आपका, और सभी की ओर से भी आपका अभिनंदन मैं करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ है पवन पांडे जी। जय जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। अब मैं जो है पिछले एपिसोड में जो बातें कही गई थी उनको हिंदी में थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, ताकि अद्वैत जी के लिए एक पृष्ठभूमि बन जाए, और उस पृष्ठभूमि में अद्वैत जी आगे का एपिसोड कर सकें। तो दर्शकों, आप सबको पता है कि यूंगियन साइको एनालिसिस और फ्राइडियन साइको एनालिसिस, इसके विषय में बात करते हुए, चूंकि फ्राइडियन साइको एनालिसिस एक नास्तिक था, उसने नास्तिकता से आस्तिकता का सफर तय किया था। यूंगियन ने जो है उसका एडवांस वर्जन प्रस्तुत किया, और उनकी रिसर्च ने वास्तव में शिव स्वरूप जो अर्धनारीश्वर है वहां तक वो पहुंचा, और उसके बाद शिव का जो जो कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा का जो नटराज भगवान का जो नृत्य है, तांडव नृत्य तक की आभा तक वो पहुंचा, और किस तरह से उसने सनातन की महिमा का महिमा मंडन किया अपने इस साइको एनालिसिस में, इस पर हमने जो है चर्चा करनी है, और आगे भी जो तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे बताया था कि फ्राइडन साइको एनालिसिस के साथ साथ कुछ अन्य पुराने साइको एनालिसिस थे, वो कुछ सीमित तथ्यों को मानते थे, जिसमें से अल्फ्रेड थे, केरन, होमेस हमने की थी। यूंगियन रिसर्च किया, उसमें से आदि का जो है बहुत ही अच्छा चित्रण किया, और ऑब्जेक्ट रिलेशन को डिफेंस में बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया जाता है। डिफेंस सेक्टर में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन थियोरी का। ठीक है। उसके बाद सेल्फ जो साइकोलॉजी है, उसमें अटैचमेंट थियरी जो है, ये सारी साइकोलॉजी नई और व्यापक हैं। इन नई सारी की सारी नई साइको एनालिसिस की या थियरीज का जो सूत्रधार किया था वो यूंगियन ने किया था। डिफेंस में प्रोफाइलिंग के लिए जो नई यूंगियन की साइको एनालिसिस है, उसको डिफेंस की प्रोफाइलिंग में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। डिफेंस सेक्टर में क्रांति आ गई थी इस साइको एनालिसिस की वजह से, ये आपको समझना होगा। उसके बाद फिर एनालिटिकल साइकोलॉजी जो है, इसको यूंगियन ने सबसे पहले दिया था, और एनालिटिकल साइकोलॉजी में कलेक्टिव कॉन्शियस Bhupji, you में are not audible. Bhupji, you are not audible.
In the meanwhile, Bhubji is not audible. Without Bhubji, the scene won't be set. और Bhubji, you are आर्किटेक्ट not के से mute. आध्यात्मिक विषयों की बात विषयों पर या पुराने जो Bhubji, hello. You are not audible for a long time. Your voice comes and goes. Am I audible? This has become a problem with Bhubji's internet. Bhubji's internet is not working and he has dropped. Anyways, Bhubji will give a Hindi introduction to the concepts we had discussed yesterday in the last session. Sorry. अद्वैत जी अभी देखिए मेरी आवाज ठीक है? हाँ, now you are audible, but you were not audible for a long time. In fact, I think so 30 seconds or more. अच्छा तो मैं जो मैंने शुरू में बताया जो रिकैप कर रहा था उसमें से कहाँ तक मैंने जो बोला था उसके बाद आवाज चली गई थी? You just completed the defense object relation theory. अच्छा After ओके that you were not audible. ठीक है तो मैं उसी के आगे शुरू करता हूँ। मैं रिकैप कर देता हूँ हिंदी में दर्शकों को। फिर एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में जब बात की यूंगियन ने तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और आर्किटेक्ट से आध्यात्मिक विषयों की बात की। तो जो स्पिरिचुअल विषय जो धर्म में सनातन धर्म में पाए जाते हैं वहां तक की खोज यूंगियन ने की और वहां तक पहुंचा कि हाँ जो हम स्पिरिचुअलिटी होती है जो आध्यात्मिक विषय होते हैं वो इस साइको एनालिसिस से जो है वहां तक पहुंचा जा सकता है और उनको ठीक ठीक से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये बात यूंगियन ने पहली बार देखी। उसके बाद और आर्किटेक्ट से आध्यात्मिक विषयों की बात करते हुए मुख्यतः Archetype. 6 प्रकार की समस्याओं का समाधान भी जी अद्वैत जी Archetype. हाँ आर्केटाइप यस। तो आर्केटाइप से उन्होंने जो 6 प्रकार की समस्याओं का समाधान निकाला और वो पहली समस्या का समाधान क्या था? कलेक्टिव अकाउंट अनकॉन्शियस आर्केटाइप। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर्केटाइप थी ये पहला था। इसी से दोनों ही इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन एक मेंटल स्टेटस के स्वभाव बने। पहले जो फ्राइडन साइकोएनालिसिस में थे या पुराने साइकोएनालिसिस में था वो एक्सट्रोवर्ट को तो मानते थे और इंट्रोवर्ट को जो है वो अलग से देखते थे, लेकिन इन्होंने एक मेंटल स्टेटस के तौर पर पहली बार स्थापित किया। तीसरा नंबर का आता है जुंग की फिजिक ऊर्जा भी सामान्य बनी, यानी कि फिजिक ऊर्जा के आधार पर अधिक सामान्य नियम उन्होंने निर्धारित किए और जो आज भी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस में आ रहे हैं। फिर जीवन पर्यंत एकाकी समाधान मिला। जीवन पर्यंत एकाकी में एकांत में जो ऋषि मुनि चले जाते थे या जो लोग जो है एकांत पसंद होते थे उसका क्या कारण है और उसका इलाज क्या हो सकता है, उससे कैसे समाधान हो सकता है और उसको किस तरह से अगर स्पिरिचुअलिटी में जोड़ जोड़ दिया जाए तो वो प्लस पॉइंट बन जाता है और अगर स्पिरिचुअलिटी से अलग नेगेटिव एनर्जी में हो तो वो किस तरह से बीमारी का रूप ले लेता है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। पांचवा नंबर उन्होंने बताया कि सकारात्मक स्वभाव मनुष्यों के प्रति जो बनाता है। उन्होंने पांचवी थियरी के अनुसार ऐसा सॉल्यूशन दिया जिससे कि ह्यूमन काइंड के लिए, मनुष्य जाति के लिए एक पॉजिटिव जो है वातावरण बना। पहले जो है मनुष्य जाति के लिए क्या था कि वो बहुत ही सेल्फिश होते हैं, बहुत ही जो है सेक्स ओरिएंटेड होते हैं और सेल्फिश होते हैं। लेकिन उन्होंने इससे ऊपर उठकर बोला कि मानवतावादी
जो नॉर्मल जो स्वभाव होता है वो भी मनुष्य के अंदर होता है। केवल सेक्स ओरिएंटेशन और जो है सेल्फिशनेस केवल नहीं होती है, वो एक स्टेट है। लेकिन मानवता और पूरे संसार और प्राणी मात्र के लिए मानवता का जो बात करता है वो भी मैनकाइंड के अंदर होता है। और ये बात सनातन धर्म में भगवत गीता में बहुत अच्छे से कही गई है कि मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, न्याय, सत्य, समर्पण और सामर्थ्य और धैर्य को जो है आधार बनाया गया है धर्म का, इस बात को मानवतावादी आधार देकर युंगियन ने पुष्ट किया और मनुष्य जाति को मानवता के ओर भी मोड़ा और उसके बारे में बताया। उसके बाद युंगियन ने छठवां जो जो युंगियन न्यूरोलॉजी के बारे में बताया कि खुशी, दुख आदि के कारण क्या है और इसके इलाज क्या है। बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, डिप्रेस हो जाना, इसके कारण और इलाज, इसके विषय में भी युंगियन ने बताया। उसके बाद यूंगियन साइको एनालिसिस के मुख्य अंग क्या-क्या हैं, हमने पिछले एपिसोड में उसकी भी चर्चा की थी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस और ईगो क्या है, इसके बारे में हमने बताया था। फिर पर्सनल अनकॉन्शियसनेस एंड कॉम्प्लेक्सेस, इसके बारे में हमने बात की थी। फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड आर्केटाइप के बारे में बात की थी, जो अभी हम आर्केटाइप के विषय में बात कर रहे थे। उसके बाद साइकिक कंटेंट के विषय में भी हमने चर्चा की थी। तो साइकिक कंटेंट क्या होता है? थॉट्स और आइडियाज, विचार और आपके जो नए-नए इनोवेटिव आइडियाज आते हैं आपके दिमाग में, उसके विषय में बताता है। उसके दूसरा नंबर आता है फीलिंग्स और इमोशंस। हमारे जो इमोशन क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, उसके बारे में बात होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है यादें। यादें कितने प्रकार की होती हैं? दिमाग में बसी हुई यादें जो हमको याद हैं, और भूली बिसरी यादें भी होती हैं जो हमको कभी याद नहीं रहती हैं, लेकिन कभी न कभी हमारे दिमाग में वो कहीं न कहीं अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई हैं। इसको भूली बिसरी यादें कहते हैं। जैसे हमने दूसरी क्लास में अगर हम जब थे तो हमारा रोल नंबर क्या था हमको याद नहीं है, लेकिन एक टाइम में हमारे दिमाग में वो रोल नंबर था। ठीक है? दबी हुई बुरी घटनाएँ जो हमारे जीवन में बहुत ही अप्रिय घटनाएँ हो जाती हैं, हम उनको भुलाने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार हम ये भूल जाएँ तो बेहतर होगा, तो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उनको जो है याद नहीं करना चाहते हैं, तो वो दबी हुई बुरी घटनाओं की यादें होती हैं। चौथा नंबर होता है उद्देश्य और इच्छाएँ। हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य और उद्देश्य जो है निर्धारित करते हैं, और कुछ कुछ इच्छाएँ होती हैं मन में। ये भी एक दिमाग में हमारे चलता रहता है। तो ये इसको जो है साइकिक कंटेंट के विषय में इसको जोड़ा जाता है। उसके बाद छवि बनाना, अवधारणा बनाना। छवि बनाना अर्थात अवधारणा बनाना। जैसे चेतन और अवचेतन मन में। यहाँ पर जो साइको एनालिसिस में चेतन और अवचेतन मन की बात हो रही है, ये केवल और केवल जैसे हम मेडिकली जो जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होते हैं उसकी बात हो रही है। ये हमारा जो आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस और परमात्मा और पुरुष और जो है अद्वैत में जो बोला जाता है, या सनातन में जो कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस की बात होती है, उसकी नहीं हो रही है। मेडिकली हम मूर्छित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, कोई बीमारी की वजह से मेडिकल इलाज मिलता है तो फिर से हम होश में आ जाते हैं, उस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, अवचेतन और अवचेतन की बात हो रही है। तस्वीरें और चिन्ह जो सपने में देखी हैं, हम कई बार सपनों में कुछ ऐसी छवियां देखते हैं जो हमारे दिमाग में बस जाती हैं। कोई ऐसा प्रतीक देखते हैं, कोई ऐसा चिन्ह देखते हैं जो हमारे दिमाग में बस जाता है। विचारों में आई कई बार हम कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं कि यार हमको ये सोचना है, जो हम जिसको बोलते हैं फिक्शन, फिक्शनलाइज करते हैं हम कैरेक्टर्स को और चीज़ों को, वो भी हमारे दिमाग का ही विषय होता है। विचारों में आई है, प्रत्यक्ष रूप से कोई किरदार विचारों में आ जाए, कोई काल्पनिक आप कहानी लिख रहे हो तो प्रत्यक्ष रूप से उसका कहानी का हीरो, विलेन आपके दिमाग में वो सब आने लगते हैं, वो सब है। तमाम प्रकार की जटिलताएँ होती हैं जीवन में, बहुत सारी जो है परेशानियाँ, जटिलताएँ होती हैं, तो आप उसमें उलझे हुए होते हैं, तो वो उलझनों को भी हमारा दिमाग हैंडल करता है। उसके बाद फिर है आर्केटाइप में, पुस्तकों में पढ़े हुए या सोचे हुए काल्पनिक चरित्र आदि और मुख्य लोग जो परमानेंट जिस इस मानवता या सभ्यता में उपस्थित है। हम क्या करते हैं कि हम विचारों में उन्हीं के उसी तरह से मिलते-जुलते किरदारों के बारे में सोचते हैं, मिलते-जुलते जो है विषयों के बारे में सोचते हैं जो इस संसार में हमने देखे हैं या इस संसार में उपस्थित हैं। ठीक है? उसके बाद युंगियान ईगो क्या है? युंगियान ईगो के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात किया था। युंगियान ईगो है जहाँ से
तंत्र की चेष्टा यहीं से निकली है, ईगो से। और यहां से ही दर्शकों, यहां मैं आपको लाना चाह रहा था, क्योंकि यहां से शिव का अर्धनारेश्वर किस तरह से ईगो के द्वारा हम आगे युंगियान पाएगा, और किस तरह से वो शिव के तत्व को प्राप्त करेगा। कहते हैं परमात्मा को पहुंचने के लिए ज्ञान, ध्यान और विज्ञान 3 तरीके होते हैं। ज्ञान यानी कि आप जब अधिक ज्ञानी बन जाते हैं, धर्मादि ग्रंथों का और जो है वैचारिक और सांसारिक ग्रंथों का ज्ञान कर लेते हैं, सामाजिकता का ज्ञान कर लेते हैं, तो आप जो है परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं। या फिर ध्यान करके, यानी भक्ति करके, ध्यान भक्ति और इस मार्ग में जाकर जो है आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। या तो विशेष प्रकार का ज्ञान, जिसे विज्ञान कहते हैं, विज्ञान यानी विशेष प्रकार का ज्ञान अब अर्जित करते हैं, किसी चीज की रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करते करते उसके डॉट्स अल्टीमेटली वहां पहुंचते हैं जहां पर सनातन धर्म के अनुसार परमात्मा की व्याख्या की गई होती है। ये 7 एपिसोड करने का हमारा उद्देश्य ही यही था, कि हम आपको ये बताएं कि कहीं से भी आप शुरू करो, अंत में आप पहुंचोगे उसी परम सत्ता पर। आप कहीं भी भटकते रहो, आप नास्तिक होगे तो भी उस परम सत्ता पे पहुंचोगे, आप आस्तिक होगे, किसी और रास्ते को, मार्ग को जानते हो और समझते होगे तो भी, अगर आप उस पे भी चलते जाओगे तो ये सही दिशा में आप चल रहे हो, तो अंततोगत्वा आप परमात्मा के परम ज्ञान तक पहुंच जाओगे, यानी सनातन के परम ज्ञान तक पहुंच जाओगे। तो इसकी हम बात कर रहे थे। तो तंत्र की चेष्टा में युंग की दृष्टि में क्या है, ये जानने से पहले फ्राइडियन ने क्या कहा था उसको हमें समझना होगा। फ्राइडियन ने कहा You are not audible, Bhubji. You are था कि for ईगो और अद्वैत जी, आवाज आ रही है अभी? nah. Your voice is अद्वैत जी, breaking, and yeah, your voice is breaking, and for like 15 to 20 seconds you were not audible. अच्छा, ओके, नाउ इट्स ओके। Now it's okay. हाँ, तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर बैक से चला जाता हूँ। तो यूंगियान ईगो के बारे में दर्शकों हम बात कर रहे थे। तो यूंगियान ईगो में तंत्र की चेष्टा इसी से की जाती है। अब ईगो का विचार क्या है और उसकी परिभाषा क्या है युंग की दृष्टि में, उसको जानने से पहले हमें फ्राइडियन ने ईगो के विषय में क्या कहा था उसके बारे में जानना होगा। तो फ्राइडियन ने युंगियान से पहले ईगो के विषय में कहा था कि सुपर ईगो और ईगो के बीच में ब्रिज का जो काम करता है, या मैनेजर जो है, उनके बीच का जो मैनेजर है, उसको ईगो कहा जाता है। लेकिन युंगियान ने अपने रिसर्च में इसको और आगे बढ़ाते हुए क्या कहा कि एक्चुअल में ईगो जो है वो चेतना का एक भाग है। ठीक है, उसका चेतन और अचेतन के बीच में उपस्थित चेतना का ही एक भाग है, वो उससे अलग नहीं है। तो यहां से अब अर्धनारीश्वर की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ईगो चेतना के केंद्र में जो है रहता है, चेतना का ही भाग के रूप में। ईगो के 2 आधार होते हैं। अब देखिए यहां से, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ईगो के 2 आधार होते हैं, एक सेमेटिक होता है और एक साइकिक होता है। जैसे कि अब सेमेटिक में क्या है कि अ, एक ही रूप पर अ, जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में जब हम कुछ चीजें सोच रहे होते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, पॉसिबल और अन पॉसिबल के बीच की बातें होती हैं, वहां पर जो है ईगो उपस्थित होता है। अब सेमेटिक में जैसे शरीर भी दिमाग पर प्रभाव डालता है। सेमेटिक में क्या होता है कि हमारा शरीर में सपोज हमको भूख लग रही है, हमको प्यास लग रही है, हम ज्यादा ताकतवर हैं तो अपने अंदर ताकत को महसूस कर रहे हैं। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो सेमेटिक चेंजेस होते हैं, और इनको हम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन साइकिक जो होते हैं, जैसे कि गर्म चीज हमने छू लिया अचानक से, तो अचानक से गर्म चीज छुआ तो हमारे दिमाग ने नहीं कहा, अपने आप ही हमने हाथ हटाया और हमने उस हीट को फील किया। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियस था, ये जो है साइकिक था, ये स्वाभाविक है। ये इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ा, हमने पहले हाथ हटाया बाद में सोचा। तो इसको जो हम क्या कहते हैं, साइकिक कहते हैं। अब
बाद बहुत से न्यूरॉन हमारे शरीर में होते हैं, जैसे लेकिन हमको नहीं पता उन न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है? ये सेमेटिक जो है व्यवस्था में आते हैं, जैसे कि हमने हाथ हटाया था, उसी सेमेटिक के जो है परिभाषा में ये आ जाते हैं। लेकिन ईगो चेतना का भाग है, तो चेतना क्या है? युंग के अनुसार जैसे युंग के अनुसार चेतना क्या है, अब इसको समझना होगा। ये एक मेडिकल टर्म है, इससे पहले मैंने बताया था। जानकारी के रूप में, जैसे कि बीमारी के कारण कोई अचेत हो जाए और इलाज होने पर फिर से चेतना आ जाए उसको। चेतना को परिभाषित करना है, तो युंग ने कहा था कि जानकारी, अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस जो है, जो हमारे अचेतन मस्तिष्क से आती है। जैसे अकारण हाथ पांव हिलना, बिना कारण कुछ बोल देना। सपोज हमको उद्देश्य नहीं होता है, हमने कभी सोचा नहीं होता और हम हमारे मन में कोई बात आ जाती है और हम बोल देते हैं। हम जो है कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारे हाथ पांव अपने आप हिल रहे होते हैं किसी डायरेक्शन में। कई बार आपने इस चीज को देखा होगा। तो ये अकारण होता है। Bhupji, you are not audible. Bhupji, you are not audible. Hello. Bhupji, Bhupji's internet connection is not solved. The problem is still there. Hello. You are not audible for a long time, almost 30 seconds. दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आ रही होगी। Now again it went away. Bhupji, like that stream is very difficult to do. चेतन मस्तिष्क, अचेतन मस्तिष्क Bhupji, nothing is audible.
Bhubji, you are not audible completely. कोई दर्शक अगर कमेंट Bhubji, you are not audible. Hello. In the meanwhile, Bhubji is completely not audible. So, what to do? These things that Bhubji is saying is very important for today's topic. Without this, it would be very difficult. अजय जी, अभी अभी मेरी आवाज ठीक है? हाँ, your क्या कोई मेरी आवाज सुन now it is क्या okay, कोई but मेरी it आवाज goes सुन away. पा हैं? Bhubji, your sound completely goes away. It becomes blank. अरे बिल्कुल, मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ तो भी आवाज नहीं आ रही। Now it is audible, but in the हाँ हाँ a while ago, it अच्छा, ओके। completely was हाँ हाँ there was complete blank. हाँ, वो तो मुझे पता है, वो मुझे पता है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा ठीक किया है। देखो, शायद अभी नहीं जाएगी आवाज, तो मैं Okay, केवल okay. अर्धनारीश्वर तक पहुंचा देता हूं, उसके बाद आपको मैं बोलता हूं। तो दर्शकों, चेतन और अचेतन की बहुत सी चीजें हम मानव प्रजाति के आधार पर नहीं जानते हैं, लेकिन जो है फिर भी हम उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे मातृत्व। मातृत्व जो है, हमारे यहाँ मातृत्व की परिभाषा वही है जो किसी अफ्रीका के कबीले में होगी, या दुनिया के किसी और कोने में होगी, या किसी और प्राणी के लिए होगी। मातृत्व की भावना जो है, माता और पुत्र के बीच का जो संबंध है, मातृत्व की जो भावना है, वो कभी बदलती नहीं है, क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो फीड है। इसका भी रिसर्च युंगियान ने किया। फिर बोले, जैसे अब इसमें क्या होता है, ट्रिक्स होती हैं। बहुत सारे लोग ट्रिक्स का यूज करके धोखा करते हैं मनुष्य के लिए। जैसे कि कुछ ऐसा माहौल बन जाता है जिससे कि हम गलत काम करने लगते हैं।
जैसे क्रिश्चियनिटी में इसको शैतान का नाम दे दिया गया। हमारे सनातन में ग्रह नक्षत्र और दशा महादशा के अनुसार जो है ऐसा हम महादशा और दशा लग जाती है हमारे कुंडली में कि हम जो है कुछ ऐसी गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। ठीक है। ये इन सब कारणों से जीवन में जो बुरा होता है, इसको ट्रिक्स के आधार पर उसने उसमें मेंशन किया। फिर उसके बाद उसने ये बताया कि हमारे बुद्धिमान पूर्वज होते हैं। जैसे बुद्धिमान पूर्वज जो होते हैं कुछ थियरीज दे के चाहते हैं और उसको हम अक्षरशः वैसे के वैसे फॉलो करते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ग्रंथ दिए, इस धर्म का जो अवधारणा दी और हम उसको मानते हैं। दूसरी सभ्यताओं में उनके पूर्वज कोई प्रॉफिट के रूप में मानता है, तो कोई किसी रूप में मानता है। जैसे महात्मा बुद्ध को मानने वाले उनकी प्रेरणा पे चलते हैं। तो मुख्य रूप से ब्लूप्रिंट जो है ये परसोना का होता है, किसी व्यक्तित्व का। ये भगवान की, परमात्मा की, शिव की बात नहीं हो रही, परसोना की बात हो रही है। जो व्यक्ति होते हैं ऋषि मुनि आदि, उनकी कही हुई बातें कुछ सही और कुछ गलत हो सकती हैं, वो परसोना होता है उनका। ठीक है। हम लोगों को दिखाते हैं जैसे कि शैडो हमारी डार्क साइड साइड होती है और हमारा पॉजिटिव साइड होता है। फिर उसके बाद एनिमा होता है। एनिमा का अर्थ होता है, यहां से उसने ये सब रिसर्च करते करते अब वो शिव के अर्धनारेश्वर जो है स्वरूप में पहुंचा। अर्धनारेश्वर स्वरूप में कैसे पहुंचा कि एनिमा नामक उसने जो है एक इजाद किया, टर्म इजाद किया, जिसमें स्त्रीत्व पुरुषों के अंदर भी कुछ मात्रा में पाया जाता है और पुरुषत्व स्त्रियों के अंदर भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। ये तो बाय जनरली हम सभी फील करते होंगे उससे पहले भी, लेकिन ये सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च करने के बाद जब यहाँ पर आया, तो अब यहाँ पर वो शिव के अर्धनारेश्वर को देख रहा है। कैसे हमारा स्वभाव जो है कि कुछ क्वालिटीज जो है स्त्रियों में पुरुषों जैसी होती है और पुरुषों में कुछ क्वालिटीज स्त्रियों जैसी होती हैं। इसके बिना किसी का व्यक्तित्व पूर्ण होता ही नहीं है। जैसे सनातन धर्म में माना जाता है वामांग स्त्री का है और जो जो दायां अंग भाग है शरीर का, वो पुरुष का माना गया है। तो सनातन धर्म में तो क्लियर है। तो इन्हीं चीजों को लेकर उसने शिव के अर्धनारेश्वर स्वरूप के बारे में कहा कि जिस तरह से सनातन में अर्धनारेश्वर का जो Bhuvji, you are not audible. एनालिसिस करके Bhuvji, you are not audible. उसने जो टर्म Bhuvji, you are not audible. अद्वैत जी, हाँ, you are not अभी ठीक audible है for आवाज? a, हाँ, it came, but for a long time it was not there. हाँ हाँ Your हाँ हाँ, explanation तो was मैं very not दर्शकों, हाँ नहीं, टुकड़ों में कुछ तो पता चला ही होगा। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि एनिमा नामक जो जो उसने जो है टर्मिनोलॉजी इजाद की अपने रिसर्च में, डीप रिसर्च में जाते जाते, तो उसको अर्धनारेश्वर से जोड़ा कि कुछ पुरुषों में स्त्रीत्व की भाग पाया जाता है और कुछ स्त्रियों में पुरुषत्व का भाग पाया जाता है। और इस बिना तो सृष्टि चल
सृष्टि का उद्गम भी है। तो सनातन में ये चीजें मिलती हैं और उसकी रिसर्च में अक्षर से ही वही चीजें मिली और यहाँ से शिव के अर्धनारीश्वर को उसने जो है पाया। और फिर आगे उसने रिसर्च करना शुरू किया तो नटराज का जो जो तांडव नृत्य के विषय में, और जो जो हमारा जो नाट्य शास्त्र है, सनातन धर्म में नाट्य शास्त्र को वेदों का भाग माना गया है। तो नाट्य शास्त्र में जो नव रस होते हैं, ये जितनी भी साइको एनालिसिस हो रही है उन नव रसों के विषय में ही तो हो रही है। नव रस, अलंकार और 16 कलाएं जो सनातन धर्म में है, वो सारी की सारी उसकी साइको एनालिसिस में परिलक्षित होती है। इसके अलावा 8 प्रकार के जो प्रमाण होते हैं, आगे हम उसकी भी बात करेंगे, वो सब भी उसी में आ गया। और ये सब शिव के सिद्धांत में ही पाए जाते हैं। और ये सारी की सारी चीजें यूंगियन की साइको एनालिसिस में हमें मिली। तो अब हम जो है 8 प्रकार के जो प्रमाण पाए जाते हैं सनातन में, अब शिव तो प्राप्त हो गए, अब शिव का रिसर्च कर रहा है, आगे और भी होगा। आगे अद्वैत जी आज और बताएंगे। लेकिन किस तरह से 8 प्रमाणों को भी प्रमाणित किया यूंगियन साइको एनालिसिस में, वो हम बताना चाहेंगे। जिस तरह से शैडो सभी के अंदर होता है, नकारात्मक ऊर्जा के रूप में युंग ने भी इसे संयुक्त अवचेतन कलेक्टिव माइंड के रूप में पाया। अभी तो हमने सकारात्मक के रूप में जो है वो देखा, क्या बोलते हैं, एनिमा। एनिमा एक सकारात्मक ऊर्जा है जो सबके अंदर है, जिसके जिसके बिना किसी का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। और एनिमा का अर्थ होता है अर्धनारीश्वर, ठीक है, शिव, शिव तत्व। अब एनिमा शिव एनिमस। तत्व कि हाँ, शिव तत्व किसका संहार करता है, उसकी बात अब यहाँ पर हो रही है। जो भी नकारात्मक होती है, नेगेटिविटी होती है, उसको शिव तत्व जो है अपने प्रभाव से समाप्त कर देता है। विष को भी धारण कर लेते हैं शिव, नीलकंठ कहलाते हैं। यहाँ पर उस अवधारणा को जो है बताते हुए अब युज्ञान क्या कह रहा है, शैडो सभी में होता है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के रूप में। यानी कि हमारे अंदर जो हम तमस रजस सत्व ये 3 गुणों की बात करते हैं, ये वहां पर शैडो के द्वारा उन गुणों को प्रदर्शित करने की बात कर रहा है। जब हम सब इन सूत्रधारों से, आर्किटेक्ट से मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने जो है कई बार जो जो हमारा जो एनालिसिस जो इसने किया है कि नकारात्मक ऊर्जा के रूप में युंग ने भी इसे संयुक्त अवचेतन कलेक्टिव माइंड में हमारे क्या होता है। फिर हम जो अब इससे पहले हम बता चुके हैं कि जैसे हम कुछ काल्पनिक पात्र होते हैं, कुछ ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका अनुभव हम अपने कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में करते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा डीप डाइव उसमें कर जाते हैं, या उस ऊर्जा के, सकारात्मक ऊर्जा के या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में बहुत ज्यादा जब हम आ जाते हैं, तो कई बार हमको भूत दिखते हैं, कई बार हमको एंजल दिखते हैं, कई बार हमको जो है कुछ चीजें ऐसी दिख जाती हैं जो व्यक्तिगत अवचेतन माइंड में हमारे थी। यानी दुनिया में वो चीजें हैं सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के रूप में, लेकिन हमको वो सामान्य मनुष्य को वो नहीं दिखता है। लेकिन जब हम या तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, या फिर हम जो है अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर देते हैं, तो वो चीजें हमको दिखने लगती है। ठीक है। तो इसी तरह से यूंगियन ने और फ्राइडियन ने भी खुद जो है ये अनुभव किए थे। युंग ने कहा कि कुछ भी चेतना है वो ईगो से जुड़ी हुई है, और यदि मैं किसी चीज के विषय में नहीं जानता तो वो मेरी चेतना में नहीं आएगा। इसीलिए तंत्र भी एक विज्ञान है। जिस तरह से साइको एनालिसिस एक विज्ञान है, इसी तरह से तंत्र भी एक विज्ञान है। तंत्र में क्या होता है कि यही नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित वो पात्र हमें दिखने लगते हैं, या सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित पात्र भी हमें दिखने लगते हैं। तो ये जो धर्म में हमारे जो जो तंत्र को जोड़कर देखा जाता है, तंत्र हर किसी का होता है। अफ्रीकन तंत्र अलग होता है, सनातनी तंत्र अलग होता है, बुद्ध का तंत्र अलग होता है। तो तंत्र एक विज्ञान है। इसको जब हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको ये बातें भी पता चलेंगी। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। मोड्स ऑफ थॉट्स में ये सारा का सारा निर्धारित होता है। अद्वैत जी, यहीं तक मैं अपना जो है रिकैप करूंगा। रिकैप में ही आज 40-45 मिनट हो गए, और इंटरनेट की बाधा की वजह से भी ये समस्या आई। तो हमने देखा कि कैसे शिव के अर्धनारेश्वर से वो शिव तत्व तक पहुंचा युज्ञान, और वो नास्तिक से आस्तिक बना और सनातन धर्मावलंबी बना। इस बात को हमने देखा, और उसकी
एनालिसिस, किसी भी तरह की खोज, जब इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि आप जो है रिसर्च करो, खोज करो, यत तर्के अनुसंधनते, तर्क और अनुसंधान करने की बात कही गई। तो जब जीवन में, दुनिया में, इस प्रकृति में किसी भी प्रकार का तर्क और अनुसंधान किया जाएगा, तो उसका एक सिरा, अंतिम छोर जाकर सीधे परमात्मा से ही मिलेगा, या तो शिव तत्व से, विष्णु तत्व से, या सनातन की किसी न किसी मान्यता से वो कहीं ना कहीं जुड़ जाए। इसी आधार पर आप देखो, ये तो साइको एनालिसिस की बात हो रही है, आप देखो शस्त्र विज्ञान में देखो, तो सनातन में परमाणु बम, ये वो दुनिया भर के पहले से ही थे, जिनको ब्रह्मास्त्र आदि कहा जाता था, आज वही एटॉमिक पावर्स, एटॉमिक बॉम्ब्स कहे जाते हैं। मल्टी टारगेटेड मिसाइल्स हो गई, और पहले अर्जुन एक बाण छोड़ता था, 10 जगह वो ब्लास्ट करती थी जाके। डिफेंस सिस्टम हमारा जो हो गया कि अर्जुन ने बाण फेंका तो कर्ण ने जो उसको हवा में ही नष्ट कर दिया, वो क्या था कि एंटी जो है, ये जो डोम होता है हमारा, जो डिफेंस सिस्टम होता है, वो हो गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जब हम इसके डीप में, रूट्स में जाते हैं, तो सब कुछ सनातन से जुड़ा हुआ मिलता है। इसी तरह से मेडिकल साइंस में आप ले लो, किसी तरह से सामाजिक विज्ञान में ले लो, आध्यात्मिक जो है चेतना और अवचेतना की बात कर लो, सब कुछ कहीं ना कहीं सनातन से ही जाकर जुड़ता है। ये कहने का तात्पर्य हमारा है। अद्वैत जी, आज के एपिसोड को संक्षेप में आप कंक्लूड कर दे, फिर हम लिंक शेयर करेंगे और दर्शकों से बात करेंगे जी। Today's episode, because of the failure of your internet connection, because today's episode was massive. In fact, all the Devi and Devatas were there. And will you be able to actually translate this in and explain that in Hindi? जी अद्वैत जी, हम उसको, आप बोलेंगे तो उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूंगा। Okay. Thank you, Bhuvji. So let's begin. जी Bhuvji has already explained the gist of what we have gone through, and today we will understand the basic and the fundamental thing, how it connects to Sanatan Dharma. This is the question, that what it has to do with Sanatan Dharma. And the fact that it has to do with Sanatan Dharma is not my interpretation, it was Carl Jung's interpretation. Carl Jung found a deep relationship with Sanatan Dharma and also with the Tibetan Buddhism. Now, what is the thing we will discuss, and what he found, we will discuss it in great details. So, I have shared the screen, Bhubji. Please जी, incorporate it. हाँ आ गई। So, Bhubji have already explained Jungian ego. What is the definition of ego? Ego is a field of is a field of consciousness. There are two bases of ego, and these bases are somatic and psychic. And the ego is subordinate to the self. Ego, self is the complete, our complete personality, the total personality that we know, that we don't know about ourselves. It is the total one. Ego is only a small part of it. So it is understood. Now we will go into what is known as Jung's method to make, because this is a science. Psychoanalysis is a science. So science needs well-defined methods. So what was the method Jung actually followed? So Jung's method was the, actually Jung used to call people, the patients whom he used to actually analyze, because it is a psychoanalysis. So Jung used to analyze them, and Jung, what Jung did with them is that they asked the people to behave in their most natural way, so that they can be as natural as possible to express themselves in front of the doctor, psychoanalyst. So he developed some technique in doing that, and that technique is known as active imagination. The technique Jung developed is known as active imagination.
And by that idea, what Jung did is that he asked people to draw some pictures about their thoughts. Like we draw sometimes we draw a triangle, we draw many shapes. Jung asked them to draw some pictures or pattern about their thoughts. Or Jung used to tell them that, okay, what did you see in your dream? So people used to say, I saw a horse in my dream, for example. Then Jung would tell them, okay, you have seen a horse, right? Now think the horse is talking with you. Or focus deeply on the horse that you have seen, concentrate in your mind, and think the horse is moving, talking, doing whatever you like. All your imagination bring to that horse. This was the process. And what Jung found is that these people were drawn to certain geometrical structures. So the Bhobji, there is some disturbances, background noises are आई coming. नो, मैं म्यूट कर लेता हूँ. Mhm. So what Jung found is that the Freud said that you be a passive dreamer. Okay, they used to hypnotize them, and Freud used to get the information from a passive dreamer. But Jung's idea was active. Active participant should be there. So he would tell them that you focus in this image that we have already told you. Then after that, there was a method, and method is that you draw, you paint, you talk, you speak, you dance, whatever you can do from your conscious mind, you do it. Even acting is also was a part of this. This is known as kinesthetic. Kinesthetic means they will act and show their feelings inside. That one was also done. Then what was the goal was that he felt that they were acting out of their unconscious mind. The things they were not conscious of, but they were acting out of their unconscious mind. They used to draw and things from their unconscious mind. What did Jung observe? Jung observed that the unconscious part of human psyche has a goal, has a particular goal. It is not discrete, it is not random. The unconscious has a definite goal, and it is trying to become what it is destined to become. Remember, this is the very important idea of Jungian psychoanalysis. The unconscious is trying to become what it was destined to become, karma. This is the pressure of karma. In modern scientific terms, we can tell it that it is a psychoanalytical force that is making us work. But in terms of our dharma, we call it samskara and karma. Now, the unconscious has a goal. Every people has a particular goal within himself or herself. And this what moving towards the goal is the aim of life. And Jung called it individuation. This movement of the unconscious and towards the conscious, towards the goal. Our unconscious has a goal within us, and moving towards that goal is the process of individuation. He named it individuation. It is the process of integrating the disparate, often conflicting parts of the physique. Means we have got conflicting things within us. Many kinds of conflicting structures are there. We will see what are those conflicts. And our whole life's point of life, or the goal of life, is to integrate these opposite things in a way that it becomes a complete self. Okay,
unified, complete self. There should not be any contradictions. This was what Jung said is the individuation process. Now, what is the concept? The concept is Jung used active imagination, where a person can bridge the gap between their conscious ego and the vast unconscious. The conscious ego and the vast unconscious, they are in opposition to one another, and you will have to balance it, and that is known as individuation. So patient is literally giving shape to himself. A person who is a patient, because this is the method by which psychiatrists treat the patients. So patients are actually giving a shape to their own self by assisting a natural biological and psychological drive to move from a fragmented state to a totality. This is what he called self-realization. That when you move from a fragmented state, that there are opposite things in you which are fundamentally opposite, but when you acknowledge it and you get the totality of it, you realize the self. All the opposites have gone away, and you have realized that you are the one individual without any contradictions, without any oppositions. This is what Jungian self-realization is. And in Advaita Vedanta, for example, we use this all the time. That tamaha prakasha viruddha swabhavah itara अभाव अनुपपत्त्यो सिद्धयाम तद्धर्माणामपि सुतरमितर इतर भाव अस्मात् प्रत्यय गोचरे विषयिनि चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाम चध्यासः. This world is filled with opposites, yushmat and asmat, vishayi and vishaya. Yushmat means the objective world, asmat means the subjective world. Tamaha prakasha means the dark and light. Vishay and Vishaya, property and the substance. These are completely different from one another. But even though they are different, they come together and they create a mixture. This mixture is known as adhyasa, superimposition. When this superimposition goes away completely, you realize that you are the self, you are the complete Brahma. You are the whole of the universe. There is no parts in you. All these parts go away. We think in parts now. That time parts will go away, a wholeness will appear. That wholeness is the individuation. This is the moksha of Sanatan Dharma, and what Jung found out is the individuation process. Perfect individuation gives the moksha. This is the first concept. Let us see in our concept. So this is Jung's method. So method and the medium, nature of the inner pressure. So Jung's method first is the nature of the inner pressure. Now what is inner pressure in Jung's idea? This we will actually cover. Now when Jung observed many thousands of patients, mental patients, and many patients he found that had an intense inner pressure, and the pressure was of stuffed fantasies. For example, many patients used to come and say they wanted to ride a Pegasus, that is a flying horse. It is not possible, but these are fantasies. It was there in their mind, stuffed and full of fantasies. These are in Advaita, these are known as vasanas. Vasanas means fantasies. You want those things to happen, but they could not logically explain that. For example, many people after watching Game of Thrones wants to become Daenerys, for example, or wants to become the dragon Draco, or Jon Snow, for example. These are not real life things. So there are fantasies within, and there is no logic why they want to become like that.
There is no logical basis to that. So he realized that the unconsciousness, the unconscious part of our psyche, I want to show in the slide what is the structure of Jungian psyche. This is the Jungian psyche. You can see this is the outer world, this is the inner world, and this is the conscious part. This is the persona. Persona means our facade. Our facade. Facade means the way, the mask of sanity that we wear, the mask that we present ourselves to the world. We have certain etiquette, certain behavior. It is not necessarily we completely wear, but it is how we present ourselves to the society. This is the persona. Inside that persona, you see there is a part known as ego that constitute ourselves. Persona is a bigger part because many other people will not perceive us that like we ourselves feel about ourselves. For example, Bhupji actually looks at me in a different way than I look at myself, or you people look at me in a different way that I look at myself. So persona is a bigger field. Then comes the conscious part. Conscious level, you see, here is the conscious level that I know consciously. Now I'm talking with you. I have the concepts of Freudian and Jungian psychoanalysis in my mind. I know this is conscious. Now I'm talking with you. I can understand. I can look at my screen. These are the conscious part. Unconscious part. This is the personal conscious part. Always conscious is personal because I am conscious. Then comes the personal unconscious. Many concepts are there. If I try, I can recollect. For example, the name of my school. It was not there in the active consciousness, but I can recollect. This is the personal unconscious. And then the collective unconscious. The collective unconscious is the very big region you see, containing the shadow and the mana personality, soul image, and everything. This is the collective unconscious. The collective unconscious is the big part. Here it is what lies here. Here lies our things that we don't know. Even if we try, we cannot bring them back. So the collective unconscious and personal unconscious are two different things. Personal unconscious, again, remember, if we want, we can bring them back, but it is difficult. Okay. Sometimes if it is very in the depth of the unconscious, it is very difficult to bring them back. But collective unconscious is something that is there because of our biological evolution in the nature. And this personal unconscious is very important. Here, actually, the things that we personally we don't know. And the collective unconscious is that the things that we have inherited as biological creatures from our evolution. So these are the basic part of the Jungian structure, Jung's structure of the psyche. Now here you can see shadow, and this is the complexes. Various complexes are there. Complexes are nothing but emotions with thoughts. Emotions attached with thoughts. These are some, you can say, the clusters of emotions attached with thought. So these are the complexes. Complex, we have like superiority complex, inferiority complex. Many complexes are there. So these complexes are group of emotionally attached thoughts. Now, this is the inner world basically. So this is understood. Oh, what happened to this? Am I audible? Hello? Hello, am I audible? जी जी अद्वैत जी, आपकी आवाज आ रही है. No worries. Oh. Now, this is all of a sudden the screen is not behaving. Yeah. Now, Jung's method. What are the Jung's method? We will understand in a brief way. To understand this, we will have to have some time. Number one, the
nature of the inner pressure. So I have already explained what is the inner pressure. Inner pressure is the fantasies that people have within them, and these are basically uh, the things that comes in the form of fantasies. They cannot be explained. That Jung found that he realized that it is the unconscious is not a passive storeroom for repressed memories. So what was Freudian idea? Freudian idea was that it is all about the repressed memory, the uh, inner things that the unconscious part of Freudian psychoanalysis is. It is completely repressed memories. But in Jungian psychoanalysis, it is not only repressed memories. It is a dynamic and creative force. The unconscious part of us is a dynamic and a creative force that actively seeks expression. Inside us, suppose there is a painter, but suppose we are doing I am an artist inside me, but I am doing some other work, clerical work. I will find that all the time my artistic talents always try to come up. We will find a channel to express itself. This creates what is now. The thing is that when this thing, that is, for example, art, culture, many good things are also there, bad things are also there. Now when this cannot come to material consciousness, that we cannot understand it, it cannot materialize, it cannot come into our consciousness, then it creates a tension. It will create a psychological tension known as pressure. This is what the psychic energy is basically doing. It is creating a pressure. Why? Our thoughts that were there within us, we are not being able to bring it to our conscious mind. It is there in our unconscious mind. It creates one kind of pressure. This pressure is known as psychological tension. This is what we call mental stress. Basically, mental stress comes from this idea. Now, second thing, the passive dreamer to active participant. Another of Jung's definitive idea is passive dreamer to active participant. What is the meaning of this? This is a point of departure. From whom? From Freudian psychoanalysis. Now, how did Freud consider patients to be? Freud said that unconscious is the royal road to the dreams are the royal road to unconscious. This was what Freud said. Now, so what was Freud's technique? Freud said that he actually wanted the patient to become subconscious so that he can understand the dreams and he will interpret the dreams. This was Freud's concept. But Jung's concept was different. Jung said that a patient must be active so that active interpretation of the dreams is necessary. So this was a point of departure. So he asked patients to on an image that he saw in the dream that we have discussed, but while awake, not under hypnosis, but while awake. And the patients are given a free rein that whatever you can, you express yourself. And he used to say, you have dreamt of a horse, let the horse move, talk, evolve on its own and see what happens, and you tell to me. The method, what was the method? Method was painting, drawing, modeling, dancing, all this kind of acting, all these kind of things were taken, patients were allowed to do. Then auditory and verbal things were also there. They were asked to sing or write. Kinesthetic is dancing, etc. Now, spontaneous manifestation of the individuation process. What is this? As I told you, unconscious is not just a repressed memory. It has got a particular goal or aim in life. That is why in Jungian psychoanalysis, every human beings have a aim. It is not an aimless life. Freudian psychoanalysis, completely aimless life. No particular aim. All these are repressed memories are there.
that you have the brain have forgotten, the mind have forgotten, that is coming back and nothing else. But no, Jung's unconscious is that you have got a particular direction or particular aim for or goal for your life. Now comes this is the very elementary of Jung's method or Jung's process. Next, we will go into the instincts. So before that, Jung meant that by using active imagination, a person can bridge the gap between their conscious ego and the vast unconsciousness. So active imagination is the way the person can bridge the gap between the ego and the vast unconscious. Again, I told you that unconscious and the things that are there in our unconscious is not being able to come up in the conscious mind, and this creates the tension. This creates psychological stress. To remove that, Jung said there should be active imagination, and by that person will be able to bridge the gap between their conscious ego and the vast unconscious. And by painting himself, the patient is literally giving shape to himself. So whatever there is in the patient's inner mind, by bringing them up, they are giving themselves a new shape, a new form, assisting a natural biological and psychological drive to move from a fragmented state to one of the totality and self-realization. Now, he was there in the parts so far because he was unconnected with his unconscious. Now, slowly and steadily, by active imagination, he is making himself more and more total, more and more total. He is facing his shadow, and he is becoming more and more total. This is the self-realization. You realize that you are complete self. Now the instincts. So Bhupji, would you like to explain it in Hindi? एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन समय कम है, तो इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। हमने जो है मूल रूप से सनातन से किस प्रकार से ये साइकोलो एनालिसिस जुड़ता है युंगियन का, उसके बारे में अब बताने वाले थे हम। अदर जी ने वो बताया, मैं उसको हिंदी में रूपांतरण कर रहा हूँ। कार्ल ह्यूम ने बताया था कि युंगियन ईगो जो सेल्फ का सहयोगी है। ईगो सेल्फ यानी वो टोटैलिटी या हमारी वो टोटल ऊर्जा जिसका एक छोटा-सा जो है भाग ही हम अपने आप को जानते हैं। लेकिन ये हमारे अंदर की शरीर की ऊर्जा या उसकी जो क्षमताएँ हैं वो असीमित हैं। उन असीमित क्षमताओं से में से हम छोटे से भाग को ही Bhupji, you are not audible. Bhupji, you are not audible. Okay. So let me continue. This is the next slide, and this is the instincts. This is the basis from which Jung started developing the theory of archetypes, and this is the basis on which Tantra will be analyzed. So make this part of the topic very clear to yourself. So there are 5 types of instincts according to Carl Jung. Now, when Carl Jung started his researches, he focused on the ants. And especially, there is a kind of ant known as the leafcutter ant. This is the leafcutter ant. I have already shown you. Here, you see, this is the leafcutter ant. Now, leafcutter ant is a kind of ant found in the Amazon forest. They cut the leaf, and what they do, they bring the leaf to their nest,
after cutting, and they let a fungus to grow. A kind of fungus is there. A kind of fungus grows on those leaves, and ant feeds on those fungus. So these are the farmer kind of ant. Now, Jung found that these ants didn't learn about the fungus, didn't learn about the tree, didn't learn about the leaves. But these ants could identify the leaves, what to do, the fungus and the tree and everything. So it is natural that these ants had these entire tree and everything, the fungus, the tree, the leaves, cutting mechanism and everything is already there in the ants in the form of images. In the form of images. So he said that there are something known as instinct that is inbuilt. We don't have to actually learn that. It is already there in our biological self. That is why when a baby is born, and it is taken to the mother, he's automatically the baby starts suckling the mother. The baby need not to be taught that you should suckle in this way. No, it automatically it is pre-programmed to suckle and take mother's milk. This is a kind of instinct. When the baby actually is hungry, nobody teaches the baby you should cry. It is there inbuilt within the baby. It is pre-programmed. These pre-program are of 5 types. These are known as instincts. Now, Jung said that these instincts are like images or instincts perception of what is the instinct comes from these inbuilt images. Now, instincts, Jung classified instincts as action. Instincts are inherited psychological motives, motive forces. These are actually a type of motive forces that pursue specific biological role. For example, hunger. When you are hungry, you feel the hunger. You feel some rumbling going on in the stomach. You understand that, you are hungry. So this is a instinct of hunger that has a purpose. And what is the purpose? It has got a biological purpose of giving you food, of ensuring that you have got food. Then, like that, hunger, sexuality, survival, everything, these instincts have a purpose. So instinct as action. Instincts have some actions associated with that. Now, second and the most important thing is the archetypes. We covering today, very important thing. Archetypes are the primordial images. These images are always there. It was never created. It was always there somewhere in our deep unconscious. It was always it was there. And what Jung said about this archetypes are, it is present in the collective unconscious, in the deep unconscious that is shared by all humanity. And he defined archetype as instinct's perception of itself. Instinct, how instinct perceives, or how instinct actually gives itself a shape, and that shape, that particular shape or the blueprint is the archetype, basically. And what is the archetype? Archetypes are basically primordial images, as I have told you, are imaginal counterparts to these instincts. Suppose you have got an instinct, there will be a imaginal counterpart. Think of that an instinct. For example, you have an instinct of say
feeling hungry. Feeling hungry is an instinct. Now there is a idea of food that is there in your mind. This is the symbol. So every instinct will be associated with a symbol. There will be some symbol in the deep unconscious. There is a symbolical representation of the instincts, you can say. These are difficult concepts. Jung's psychoanalysis is one of the most difficult psychoanalysis, but you'll have to understand this thing to understand Tantra. And these patterns of instinctual behavior is there in the mind. So these are the archetypes. So instinct has got an associated image or blueprint in the mind, deep in the mind, in the psyche, known as archetypes. Now there is a bridge. The instinct and archetype determine one another. If an instinct is the physiological push to act, for example, your hunger is asking you to eat. It is the push given to you so that you can eat. The archetypal image is the mental pull or goal that action that gives its meaning and direction. For example, I am feeling very hungry. Inside my mind, I will not search a torchlight. I will not search a mobile phone. There will be some image will be there in my mind. What? My food. The food image will come in my mind and I will keep searching for the food. What is the food there? I will go here and there. I will look here and there and I will see, yeah, this is the shop of food. This is the place I'll get my, this is the hotel. This is the restaurant where I can get my food. So instinct will give the push and the pull will be given by the image. This push and pull works. And people who are familiar with electronics, they will understand the push-pull is a kind of amplifier. So this amplifies and actually gives our repressed, not repressed, but our internal goal. Okay, what is the internal goal, and it fulfills also. This is what the idea is, that when I am hungry, my brain will not look for example, mobile phone or anything else. It will look for food. That is, instinct of hunger is associated with the archetype of food or the image of food. So this is the Jungian idea between archetype and instinct. Very important things. Now next slide we will understand. Hope you have understood this. These are the definite the other instincts. Hunger I have explained. Sexuality I will not explain in this context. Activity, you know. Creativity and reflection. Reflection is very important here. I'll have to explain this. Creativity and reflections are very important. So creativity is not a fixed biological organization like hunger, but it gives a dynamicism and a compulsive force to a human being. So it is creativity. Reflection is what? Ability to turn inward. Okay? And reflection is not the mirror reflection. Reflection is actually reflecting on our thoughts, on the possibilities. It is a basic human instinct. Ability to turn inwards and think, retrospect about a particular thing is known as reflection. And sexuality and activity is movement, restlessness, play. These are all and any physical movement, these are known as activity. Now this is the slide that we have completed. Now the next slide. जी अद्वैत जी, कंप्लीट हो गया या अभी और रह गया? A lot of things is left, Bhubji. Archetypes. तो शॉर्ट में करो इसको सब पूरा. Short is not possible, Bhubji, because you करो see, करो.
it is a vast subject. Now, archetype. What are the archetypes? So we have discussed the archetypes is the symbol or symbols, images associated with the instincts. And there are basically four kinds of primary archetype. Number one, the persona. Number two, the shadow. Number three, the anima and the animus. We have already discussed anima and animus, and the self. These are the four basic archetype. Our idea of self is also a archetype. It is an archetype. Now, these are the major archetypes. It is already built inside us. A personality is developed in a child, but the personality is not created in the child. The persona is not created in the child. The child will become and acquire the personality what he was born with. In fact, that is what he was born with. This is the karma, past karma. That is why we were discussing about this, that how the individuation is necessary. Karma is there within the collective unconscious. It is there here. This is the collective unconscious zone. Now, the persona, this persona is also an archetype. It is a part. Without knowing also, we may constitute a personality. Then the shadow. Shadow are the repressive thoughts. Repressive thoughts, we will discuss shadow in a detailed way. Persona, shadow, anima and animus, and the self. And these are the major archetypes. Archetypes is the blueprint within our psyche. These are the lesser 12 kinds of archetypes are there. 12 lesser kinds of archetypes. Now, what are those? See, why these are important? You will have to understand that our god and goddesses are made to serve these archetypes. Now, first archetype is the most common archetype known as the hero archetype. Hero archetype is within our unconscious. The hero archetype is there. Somewhere a hero is there who will come and save us. Okay? So, to prove the worth through courageous acts. And this hero that is within us fears weakness. The hero doesn't like weakness. He is always fearful of the weakness. That is the hero that is there within us in our collective unconscious. Next is the sage. Sage is one to find the truth and understanding. The sage archetype within us, think this as independent blueprints or personalities. The sage personality or the archetype within us is about to find the truth and understanding. He's all after the truth. Okay? And he fears what? Every archetype has some fear, is opposite to something. The sage archetype fears deception because he is all good, so deception cannot be there in the sage. He fears deception. Then comes the explorer. It is another archetype within us. What is the primary goal of the explorer? The explorer archetype that is within us, it tends to express freedom and authenticity. And what is its worst fear? Being trapped. The explorer within us doesn't like to be trapped. So that is the explorer archetype. Next is the ruler. Ruler archetype within us wants to create order and control. And what he fears? The ruler fears chaos. Ruler does not like actually a chaos or indiscipline. Somewhere in us, we have a kind of ruler that wants order, that wants rules and regulation, and doesn't like indiscipline. Another archetype is creator. What is the creator? To create something of enduring value. Everyone inside us, there is some independent blueprint within us that we want to create something that should stay even after we are gone. That is the creator archetype. And
it is opposed to what? It fears mediocrity. Why it actually fears mediocrity? Mediocrity because mediocre things do not last. You create such a film, you make such a film that everybody will remember, like Three Idiots. Everybody remembers. You don't want to create a mediocre film that everybody forgets. So that is the creator within us. Now, caregiver. Caregiver is an archetype that help and protect others. What it fears? Selfishness. Caregiver archetype within us, what it does, it protect others and fears selfishness. We don't like, somewhere inside us there is a caregiver, and this caregiver doesn't like selfishness, because if you are selfish you cannot give care to others. Then comes the magician. Magician is a unique thing, and it is found in these are found in every culture. These 12 archetypes, along with the 4 major archetypes, are found in all the cultures of the human existence. Now, next is the magician. What is the magician archetype? It makes dream comes true. It makes dream come true. For example, you are wishing something, suddenly magician make it appear out of nothing. And what it is fearful of? Negative consequences, opposite of what you thought, or your wish didn't come true. This is the fear of a magician archetype within you. Lover. Everybody has got a lover within everybody. We all know this. And this lover archetype seeks intimacy and connection. Okay, we want to be intimate with people. And what is the biggest fear of the lover archetype? The biggest fear of the lover archetype is loneliness. Lover does not want to be lonely. Next is the jester. Jester is, or the joker, you can say, the joker archetype. The jester, to live, there is we all have a joker or the jester within us that wants to live in joy and happiness, basically. And what this jester is fearful of? Boredom. Jester or joker doesn't like boredom. He always likes joy. Then another thing is there in us, that is another archetype personality that is known as innocent. The innocent is to be happy and do things right. Innocent is basically very happy and rightful things, not wrong things. And what this innocent fears? Punishment. Innocent is fearful of punishment. Okay, then comes the outlaw. Outlaw is the rebel. Everybody has in themselves, we also have in us, this outlaw, that we want to rebel against something. It wants a radical change. And what it fears? Powerlessness. For example, the Hindu Rashtrawadis now this constitution is not right. We want a complete new Hindu Rashtra. The mullahs are thinking, no, we want Shariat. These are all outlaws, rebels. Rebels against what? Present condition. What it fears? Being powerlessness. Okay? Then everyman is another kind of, or orphan. This is another kind of archetype. Everybody has got an orphan within everybody else and ourselves also, which seeks connection and belongingness. We want to belong somewhere. And what it fears? The fear of standing out, fear of being an outcast. Okay, it wants what? Connection. So these are the 12 archetypes, 12 minor archetypes, or these are the archetypes is known as common archetypal figures.
These are common archetypal figures, and major archetypes we have already discussed. Now, in the next slide, these are the archetypes we have completed. The shadow. Now, what is this shadow? Very important thing in Jungian psychoanalysis. Shadow is an archetype representing the dark side of the personality. It consists of all parts of ourself, instinct, trait, desires that we have rejected, repressed, or deemed unacceptable to our conscious ego, and the social mask that we wear, that is persona. It is directly Jung's his own statement. Now, what is the shadow? Shadow is an archetype. As we have already seen, shadow is an archetype. Now, what does shadow archetype mean? It contains three things: the repressed instincts, the golden shadow, and the inferior function. What are those? Let us understand. So, the repressed instincts. Now, repressed instincts are basically those primitive impulses that society or upbringing forced us to hide. Actually, it forced us to hide. For example, going in the public area and peeing. Although we are feeling a lot of pressure from nature's call, we don't go in the road and relieve ourselves. Why? What society will tell us? That is the, in Freudian psychoanalysis, this is known as the superego. Here it becomes the repressed instincts. So this is the primitive impulses the society or upbringing forced us to hide. Okay, like sexuality, open sexuality, and all these kind of things are repressed instincts basically. Then comes the golden shadow. Golden shadow is very important. All part of shadow is not bad. That is why we cannot say the shadow is all bad. No. Sometimes golden shadow are those positive qualities that we have suppressed because they were discouraged by the society. Okay. For example, many people have got, many children have got very good tendency to give to the others. They will give, you take this, you take that. This is a very good thing, very good positive trait. But the parents will say, I don't give this, don't give it costs money. Why you are giving it? The parents have actually repressed a good thing in the child, and what will happen? The child will actually repress it. Giving things is good, but now the child will repress it because of the parenting, bad parenting, you can say. And what will happen? It will go to the shadow. Okay, it will go to the shadow world. Then comes inferior functions. For example, in the 8 modes of thought we have discussed, cognitive functions in the last topic, the functions you use the least, the inferior ones, reside in the shadows. For example, you may not, for example, SI type. SI type, for example, we have discussed. We don't use that. We don't sensing introversion. We don't do that. So that will go to the shadow, part of the shadow. Now another thing, shadow will also manifest. Shadow is not that it is just in the locker room. It will also manifest. And how is shadow manifest? Because the ego cannot look at the shadow directly. Our ego cannot look at the shadow directly without discomfort, because we'll always have some kind of discomfort because we don't like our shadows. Our shadow personality, we never like it. For example, a person who having a natural tendency of stealing,
but he doesn't like it, and he doesn't steal, because stealing is bad. It is said in the 10 commandments, or it is said in the 10 rules of dharma, that one cannot steal. So he will say, no, I will not steal. But that shadow is there. That thought of stealing is already there in his shadow. So what he will do? He will try to, he will be fearful of that shadow. That under bad circumstance, it might happen that he will be forced to steal, and he is fearful of that. Okay, so this is also a projection. So for example, now somebody is doing, somebody is stealing, you will find him very bad. This guy is a thief. Why? Because inside you, you know this is bad. You know inside you that is repressed. It is in the shadow, and you are looking that shadow in another guy, that this guy is stealing. Therefore, you will not like him. You will call him a thief. Why? Because you have come face to face with the thing that you have hidden in your shadow. Okay? Then everything, it is Jung's original definition, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Anything that you hate in others is there in your shadow, according to Jung. For example, you don't like women gossiping. Many women are there, they're gossiping, you don't like. That means it is there in your shadow. This is the idea, how shadow projects. Next, shadow and the persona. So what is the shadow and the persona? Here we see that this is very important part. I want to highlight this part, very important part, shadow and the persona. You see the 4 things here. Now what is the shadow and the persona? Shadow and the persona is, shadow is the direct opposite of persona, the mask that we wear in our society. Very nice person, I am a very good person, everybody will like me because of what characteristic I show. There is an opposite thing to that, and that is the shadow. It is the direct opposite of the persona. Okay, so you see here in the diagram also, it will be clear that shadow is complete opposite of the persona. This is the persona, you see, this is the shadow, completely opposite of the persona. Here we'll understand this in depth, because it is necessary to understand Shiva with this concept. Now, shadow, there is a law known as law of compensation. Okay, law of compensation says that the more perfect or saintly a person tries to appear in the social life, the darker and more primitive their shadow becomes in the unconscious. Very important. A person is appearing very, very nice in the public. His shadow is more and more primitive and darker in the unconscious. You remember this. Better a person appears, some darker things is there in their persona. And what happens? How this darker thing will come to him? In dreams. The shadow will appear in dream. He will be fearful of those things. That is why a person who is very brave in real life may see dreams where he is completely a lame person. He is not being able to do anything. He is bound and tied, and he is murdered. He can see in that way. Why? This is known as the law of compensation. You are giving energy to your particular archetype, that is your hero archetype. Obviously, the weakness of hero will be there. That is the hero is fearful of cowardice, and that cowardice will be there in your shadow. That is, it is nature. Now, shadow integration is important. You will have to face your own shadow, and that is what last time a person had come.
facing the shadow, he said, and this is most important, how to face your own shadow. The goal of individuation. Now it can be solved by individuation. Individuation is the main thing of Jungian psychoanalysis, where all the mental problems are solved. The goal of psychotherapy and individuation is to destroy the shadow, is not to destroy the shadow, but to integrate it. You cannot destroy the shadow because it is opposite. Opposite cannot be destroyed, but you will have to integrate it. Number one, self-awareness. To become whole, you must acknowledge your capacity for darkness. Okay? Your capacity for darkness also you will have to admit. And that is why gods in Sanatan Dharma, gods are not portrayed as perfectly good, because it is unnatural. There will be some part of the shadow and you will have to individuate it. It's very important. We will discuss this when we will go into Tantra. Now, one does not become enlightened by imagining the figures of light, but by making the darkness conscious. So it is Jung's own statement. He says, one does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. Means you will have to, you cannot just point towards the light and say my room is actually light, full of light. You will have to kindle the light in your dark room. Then only you can be enlightened. This is the idea. You will have to actually individuate your darkness, your shadow. Then what will happen? When the shadow is integrated, the inner pressure or disbalance of the psychic energy is released, and the person gains access to the raw vitality and creativity that was trapped in the unconscious. The moment you integrate the shadow part, okay, you integrate the shadow part, what will happen? Your psychic energy will release. The disbalance that was created in your psychic energy, because you are giving a lot of force. For example, a hero was giving the entity hero was giving a lot of force on being heroic. Then what will happen? He is giving more and more mental energy in being heroic. What is becoming inside him? The shadow is also becoming very strong. The coward is also becoming very strong. So what he will have to do? He will have to individuate. He will have to say, okay, I am heroic, but I have my limitations. I know my weakness. The moment the hero will know that I know my weakness, then what will happen? That energy gap, or the difference or the tension will go away. Then hero will not be actually fearful of a situation that he may become a coward. A person will become more practical, that there can be a situation when I can also become coward. He will know that in his mind. This is known as individuation. Now, mathematical scientific view, for those who are mathematically interested, actually free energy principle we have discussed, and the shadow can be modeled as unmodeled surprise. Basically, it is a kind of unmodeled surprise or high entropy data that the ego's current generative model cannot account for. Integration is the process of updating the internal model to reduce the prediction error. This is the actually basically you can say it is the unmodeled अद्वैत जी, surprise. अद्वैत जी, अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी डोज हो जाएगा। 2 घंटा हो रहा है। The Bhubji, main things, these are Shiva Shakti, then geometrical shape, then Tantra, what these Tantras mean, all this, then Trimurti, Shiva Shakti, Kali, all these things are there. कितना टाइम लगेगा? It will take another hour. तो आज इसको पूरा ही कर लो, कल स्ट्रीम करेंगे क्वेश्चन, दर्शकों कल की स्ट्रीम करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आज इसको फिनिश ही कर देते हैं। Yes. करो।
Now the principle of opposites. Principle of opposites states that the conflict between the opposing processes or tendencies is necessary to generate psychic energy. The sharper the conflict between the polarities, greater the energy produced. That one I said that the more a person becomes a hero, inside the shadow he is more a coward, and he will be fearful of that. He will always remain in the fear that what if there is a situation where I'm a coward, I'm proved to be a coward, what to do? So what is becoming, if he just enforces himself to become a hero all the time, then what will happen? There will be a mental stress because of the psychic energy. There is a difference in the psychic energy. Psychic energy is more in the hero and very less in the coward, and coward is there in his shadow. Where is the shadow? Again, let us see in our psychoanalytical diagram that this is what is the ego part, where we consciously know, and this is the shadow part. It is the opposite of the persona. Now here we have understood that the principle of opposites work. Now we will understand the basic idea of the principle of opposites. So what are the opposites? Core structural opposites. Now these are the main opposites. In Jungian psychoanalysis, these are the base opposites, main opposites. What are they? Those conscious versus unconscious, ego versus shadow, persona versus shadow. So we will understand all this. Now what are those? Ego versus shadow. So what is the ego versus shadow? Ego is our, as we have already discussed, ego is the part of the consciousness that is actually involved in active awareness. That is the part of the ego. Now here first we will understand the persona versus the shadow. What is persona versus shadow? The persona is the mask. Persona is the mask that we wear. We have already seen. It is the archetype of adaptation. Means, for example, you are in a party, you try to act like a party guy or a party girl. You don't try to act like a non-party girl or a fun creature in the party. You don't do that. You adapt yourself. And it represents what? The social mask that you wear. And we wear these masks to meet our social expectations. And we present a stable and acceptable identity so that people know us by our positiveness, basically. The shadow is the counter persona, opposite of our persona. This is the exact opposite of our persona. In the party, for example, you are expected to become a very party like, dance and all, have a lot of, you can sing well, like that. These are the personality of a party going guy. And in your shadow is complete opposite of your persona. That is, in the party you are dancing, in the shadow you cannot dance. You are less energetic, completely drained out. So these are there in your shadow. These are the opposite thing. And what is the relationship between the persona and the shadow? This relationship is necessary. These are twins, basically mirrors of one another. That if there is an object, its image will always occur. That is why they cannot be removed. If one is present, other will be present. So a rigid and idealized persona creates a correspondingly deep and powerful shadow. Okay, a very high amount of party guy, a very what to say,
an avid party guy will have a avid what to say energy drained fellow, or a asocial being in the shadow of his own mind, psyche basically. Now, what is necessity? Individuation is necessary. You will have to break the identification with a party guy. I'm not a party guy. You will have to understand this. I'm not a party guy. I actually do some party, but I'm basically not a party guy. You will have to remove your identification from that kind of persona, party guy persona. So you'll have to assimilate with the shadow. What is the shadow? You are a drained out fellow. That is the shadow. And you say, yes, I'm basically, I go to the party, but I'm not associated with the party. This is what Sri Krishna told to Arjun. Don't associate yourself with a particular name and tag or any work. Always do work in a way that the work or the fruit of work is not desirable to you. This is one. Next is the anima and the animas. This is the Shiva and Shakti concept. This is a very important concept. Now, anima, as Bhubji have already explained, the anima is the unconscious feminine side of man. Every man has got an unconscious feminine side. Why? We are man, for example. Now, we are man, we think, we give our psychic energy more into man-like activities, because society wants us to be man. So we channelize our psychic energy to the more and more manly side of the things. But what happens, as we give energy one-sidedly, in the shadow, feminine becomes more strong. The the feminine part, anima part, becomes very strong in our unconscious, in the shadow basically. Then comes the animus. Animus is the unconscious masculine side of a woman. Now, a woman that wants to become more girly type, she will wear all kind of girly dresses and all kind of things and all perfumes and makeup. Inside her, in her shadow, the male characteristic is growing stronger and stronger. Okay? Her dreams will be more man-like. So there will be mental tension. You will find many people after becoming models and all, they have psychic problems. Why? They associate with a particular thing. So they will have to individuate. So Jung called the pair of this opposite, these two opposite, that is anima and the animus, as CGZ. CGZ is the word he used for that. It is a union of opposite forces. Okay? They represent contrasexual opposite within the psyche. This is the yin and the yang, Shiva and Shakti. Same concept appearing in different cultures. Okay? Yin and the yang. In Chinese religion, yin and the yang comes, the concept of yin and yang comes. Now, what is the relationship? They compensate for the one-sidedness of person's gender identity. Okay? For instance, the anima may govern logic. The animus will govern logic in whom? In woman. Because it is there in women. Okay? And anima may govern connection in a man. Okay? Now the thing is that, suppose in a man, only male counterpart is there. That is logic. And what will happen in his subconscious, that is in his shadow, the anima will grow stronger and stronger. What will see? He will see that although he is very logical, he is asocial. He is not having social connections. Nobody likes him. Oh, he is a scientist, he is this and that. People will avoid him. He doesn't have any connections. Why?
because he has given only to logic. He has focused his psychic energy only to logic. Therefore, opposite of logic, that is the connection, social connection, women-like behavior will suffer in him. That is why what he needs to do, and he will become unhappy in the end of the day. Nobody likes him. He comes, nobody likes him. So what he will have to do? He will have to understand, no. I need to be not only logical, also I need connections. I need to accept some of the illogical thing people will say while I am in connection. So this is known as individuation. When the male characteristic of a female and the female characteristic of a male comes and individuates with their personality, or male-like personality or female-like personality, then what will happen? They will get a complete life. And our life is about getting completeness, the complete self. Next is the ego and the self. We have already discussed ego and the self, the center of the conscious mind and the personal identity. The self is the master archetype. We have already discussed the self is the complete totality of our personality. Totality. It contains ego. It contains the unconscious. It is the complete self, complete thing. Now, the self is the master archetype because we are born with this. It represents what? The totality of the psyche. Again, I want to show these things so that people can connect it, that it is the totality you see here. This is the self. This whole is the self. Complete our psychic world. Now, principle of the opposites. Now, here I want to tell you that what is this ego and this self? Ego is the center of the conscious mind, we have already discussed. The self is the master archetype, representing the totality of the psyche. That includes what? Both conscious and the unconscious part. The relationship is what? The self is coincidenta oppositorum. It has been given the name of coincidenta oppositorum. This is a technical term. It is a Latin term. The coincidence of the opposites. It is the bright and dark, yet neither. It is bright and dark because all things are present here, and yet neither. It is none of brightness or darkness. Individuation is the movement from a limited ego-centered identity to the self-centered one that can hold the tension of all inner opposites. So what is the meaning of this? The meaning is that the self is the totality. So there all opposites are there. For example, cowardice and hero, man, animus and the anima, all these things, opposites are there in the same self. Okay? And it holds the tension of all these opposites, because whenever opposites are there, there will be tension in the psychic energy, there will be mental stress will be there, and the self holds it all together. This is the idea of the self even in Sanatan Dharma as well. It holds together. Sadadhara prithividyamutimam kasmai devaya havisha vidhema. That if there is a self behind this universe, that also holds all the opposite forces that is coming, like Devasura and all, that holds together. Dual nature within single archetype. Now, another thing. Every archetype has got a dual nature. For example, the mother archetype. Very famous archetype, mother archetype, we have discussed. Mother archetype, then the trickster archetype, wise old man archetype. These are important archetypes. Now, mother, you have to understand one thing, that all the archetypes have opposites. Mother archetypes has also its opposite. What is the positive side of mother? Mother is loving, caring, nurturing. This is the positive side of the mother. The mother will also have a negative side in the shadow part. And what is that? Devouring.
killing. The mother kills, mother who destroys, mother who punishes. That is why this mother archetype is composed of two parts, Durga and Kali. Durga is the part of that mother that is nurturing, loving, kind, and Kali, the terrible one, the devours, that kills. Obviously, that kills the evils, but actually kills. Very terrible one. Then the wise old man. Wise old man is profound wisdom. A person, it is within us, the archetype that is filled with wisdom. Okay. Now, the wise old man is a very wisdom, wise entity within our archetype. But opposite to that is another entity is there, that is deceptive, stagnant and dark figure. That is opposite of wisdom, that is avidya or ignorance. It is a stagnant figure, it doesn't work actively. Then the hero. We have discussed the hero persona, very important persona. Archetype. Hero is an archetype. Now, hero is what? The hero archetype has got two parts again. What are the two parts? One part of the hero is very powerful savior. Another is the destructive, ego-driven force. That is why in Marvel comics also you will find that there is a hero, there is an anti-hero. This idea of anti-hero and hero is there because of this. Anti-hero is that hero that is destructive, basically. Not villain, anti-hero. That is ego-driven, destructive. For example, Hulk and normal, Hulk, what is his name? I've forgotten. And Hulk, basically. So they are opposite of one another. So every archetype that we have seen here, we can see the archetypes. All the archetypes have got opposites. All the archetypes have got their opposites within itself. That is the purpose of Mata Kali and Mata Durga. This is very important. And all the tantric god and goddesses are actually having two sides. That is why we will understand that as well. Now, typological opposites. Now, what are typological opposites? Introversion versus extroversion, thinking versus feeling, sensation versus intuition. We have already discussed this in details in the past lecture, but we can go through a revision that the people who actually think a lot more, generally have less sense of feeling. These are opposite of one another. Okay, so this has to be understood in a proper way. Introversion versus extroversion. Now, what is introversion versus extroversion? We will understand. Wait. Now, what typological opposites are the modes of thought, basically we have already discussed. So typological introversion is energy focused inwards. Okay, that is the attitude, energy focused inward, versus extraversion, that is energy focused outwards. Rational functions is thinking, that we think with our objective logic, and feeling, that is subjective values. Both are completely opposite of one another. Thinking and feeling are opposite of one another. Introversion and extroversion, completely opposite of one another. Sensation and intuition, these are irrational, but these are also completely opposite of one another. You sense something is completely different from your intuition. Intuition, you from inside it comes, and sensation from outside you perceive, and intuition comes from your inside. Hunches come. For example, today you think it will rain. This is the intuition. Today you are sensing there is rain.
completely different of one another, opposite of one another. Transcendent and natural opposites. These are actually really opposite, and all the time it will be opposite. What are those? Light and dark. Tamaha prakasha viruddha swabhava. Good and evil. Good and evil is always opposite of one another. Whether you believe it or not, good and evil exist, but obviously these are opposite of one another. Spirituality versus sexuality. Spirituality and sexuality cannot exist together. Spirituality and sexuality, these are opposite of one another. Love versus will to power. Now, love is what? Love is what? Sacrifice. It loves sacrifice. Although there will be power, but it will not focus on that. Love versus will to power. That is, love will want what? Even if there is power, love will want equity, but will to power will not want equity. I am more powerful than you. That will come. So these are opposite of one another. Now, light and darkness also needs individuation. Good and evil also needs individuation. That what will happen? All good, all good, all good. If you think in that way, you will be frustrated with the evil. That is the problem with the Abrahamic school. Actually, some schools of Abrahamic thought, they always focus on the good, but evil comes in the society. Evil is already there. They cannot remove it. Whatever they do in their churches, evil becomes more and more. You have to understand the evil is also the individuation is necessary. That is why in our Sanatan Dharma, the good is not 100% good, evil is not 100% evil. Why? Because it doesn't occur in nature. Ravana had some good qualities. Okay, Ravana had some good qualities. Rama had some weaknesses. You'll have to understand this is known as individuation. So this has to be understood in that way. Otherwise, what will happen? It will create a sort of tension. Ontological tensions will be there, and nothing will. In fact, you can express this in set theory also. Two disjoint set will be dependent on one another. To be independent, you will have to individuate. We can show through set theory as well. Now, love versus will to power, and we have already shown. Love should be there, but only love. If you only love your child, you will spoil that child. You will have to punish also. You will have to have the power to control also. Then only love will be real love. This is the individuation. Only love for love, whatever your son is doing is good, then your son will go astray. That is the thing. And in context of good versus evil, if you want to make the society only good and not evil, you will end up killing everybody. That Inquisition had done in the Middle Ages. Weaknesses are there in the society. You will have to accept that. Result of the opposite is known as enantiodromia. This is a term known as enantiodromia, result of the opposites. When the conscious attitude becomes too extreme, when a conscious attitude becomes too extreme or one-sided, Jung warned of enantiodromia. What will happen? One-sidedness will occur. The psychological law where a state eventually runs into the opposite to restore the equilibrium. So it happens many a times. For example, a person who is very much extroverted, he always goes after external wealth and success and everything in life, suddenly becomes introverted and he goes to the forest. Why? He was giving one-sided psychic energy on the extrovertism. Obviously, there was a very big hole in the introvertic in the opposite part, in the shadow. That is why he will have to go back
and actually individuate and become a stable guy, where he will go to the forest, he will leave all the external activities and he will concentrate on the inner part. Aim is the union of the opposites. There should be union of the opposites. Tamaha prakasha viruddha swabhava itara itara bhava anupapatya siddhayam तद्धर्माणाम अपि सुतरमितरेतर भाव अस्मात् प्रत्यगोचरे विषयिनी चिदात्मके युष्मात् प्रत्यगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाम चाध्यासः. This will come together to create the adhyas. You cannot remove the adhyas like that. So you have to understand that perfect light and perfect darkness don't exist. Lack of light is darkness. Darkness doesn't exist differently. You will have to understand that. So when the wholeness will come, when you acknowledge the two-sided of the matter, the opposite, then your personality will become whole. Next, this one I have explained the core structures, persona versus shadow, and all these things are clear. Now we will go into geometrical shapes. This is the starting point of Tantra. Now, in Carl Jung's observation of his patients' creative fantasies and dreams, he discovered that chaotic mental imagery naturally organized itself into a set of basic universal shapes and symmetries. Jung identified these geometrical patterns as the simplest expression of the formative principles at work in the human psyche. Now, as again we go back to our original discussion where we discussed about Jung's idea about patients' creative fantasies and dreams. What is the meaning of this? We go back in the earlier slide where we found that Jung was asking his patients to draw, to express themselves, and what did they draw? And Jung, in his observation, found that people were drawing universally certain type of symbols. What are those? Circle and the sphere. Patient used to draw in their subconscious mind a circle or a sphere. And Jung understood that it considered means the circle represented rotation and totality of the self, the whole one, the unified whole. The inner unification is actually expressed in a circle. That is why a person who is not having any kind of mental problem will tend to draw circles, perfect circles. Okay, it is the representation of inner state. Then the square. Next, people draw very commonly, that is square. This shape represents the manifest reality. For example, the four functions. It also represents earth. People say earth has got four corners. In many places it is there. It does not mean that the earth is flat. It means that it has got the four qualities. And what are those qualities? Thinking, feeling, sensation, and intuition. In the perspective of the psychology, it has got these four things: thinking, feeling, sensation, and intuition. These are the cognitive processes. People tend to draw this circle without knowing this square, without knowing that it represents the four things. And in Sanatan Dharma also, our entire consciousness has got four parts. Okay, and this is a very important thing. And what are those? Number one is your Jagruti, the aware world. Second is the Swapna. Third is the Shushupti or deep sleep, and fourth is the Turiya or the whole self. This fourth, that four idea of four is there in Sanatan Dharma as well.
And in Abrahamic religion, they say 4 corners of the earth. Actually, it means this. Equidistant cross. Many people draw crosses. Swastika is one example of that kind of cross. In every society, whether in the distant of the distant societies in the Amazon forests or in the other places, we find that people do actually draw these circles, squares, crosses, etc. Why? Because it actually represents something very important. It is the union of the opposites. Cross is something that unifies opposites. That is why Christians actually worship the cross. In Sanatan Dharma and Buddhism, swastika is there. It represents something. What? Union of the opposites. Then triangle. Now triangle is basically triadic formation. That it is also union of the opposites in a third. Okay, 3 types of opposite union has occurred in triangle. We will understand when we'll look into Kali Yantra. Then the mandala. Okay, the mandala is the most important part. The square and the circle. And it is typically it is a circle within a square or a square within a circle. So both variants are there. Jung identified as the climax of psychological development. He found that mandalas spontaneously emerged from the unconscious during the periods of psychological transformation to restore order and balance. Mandala will appear when a person is becoming more and more self-realized, more and more individuated. His spirituality is increasing. Then he will draw, unconsciously he will draw this kind of mandala. And our yajna is also generally done in this square and circle formation. There in the Sulva Sutra. It is there in the Sulva Sutra. Now, Jung observed that these shapes typically organized around a center point. Obviously, the square has got a center, the circle has got a center, the triangle has got a center. Obviously, where the medians meet of a triangle is known as centroid. That is the center. And also the mandala, obviously, where the circle or there is the center of circle equidistant part. So centers are there. So Jung observed that all these figures have got a particular center. And this center is, according to Jung, is the symbol of individuation, wholeness. You come to the center, you meet at the center. This is the purpose of Jung's idea of symbolism in human beings. So this is, we will actually understand this in more details now with the tantric yantras. What is the meaning of these yantras? We have seen this kind of yantras all the time. And what does this mean in terms of Jungian psychoanalysis? Now, Tantra, people say there are 3 things in Tantra. Okay? Tantra, mantra, yantra. Yantra is these things. Mantra, you know. And Tantra. Tantra, mantra, yantra. So Tantra is basically the scriptures. Mantra are the syllables that you recite. Yantra are these geometrical figures. And what does this mean? These have profound psychological implication. Now we will understand this one by one. Now in Tantra, we come across what is known as Yantra Puja. Without Yantra Puja, you cannot do Tantra. Why? Because first, these thoughts in the mind, the basic geometries that is there in our deep unconscious should be revoked.
should be invoked, so that individuation can occur. Shiva and Shakti in entire Tantra, the here you see the Shakti lies in the lower part. In this chakra, this is the Muladhara, Shakti rests here. If you can see, you will find this Shakti rests here, Shiva rests here. The entire scope of Tantra is this Shakti will rise through each chakra and it will meet the Sahasrasara where Shiva is there. The moment Shakti meets with Shiva, then what will happen? Individuation will occur and Jiva will get moksha. This is the basic idea of Tantra. Again, I am repeating. If you want to see the chakra system, Kundalini system. If you see the Kundalini system, these things will become very clear. Here you see, this is the Kundalini, physiology of the Kundalini. Let us see this. I'm just googling the image. So here you see, this is the Muladhara. Muladhara actually is a structure that is inverted triangle where three opposites meet. Basically 3 types of individuation occur, and here the serpentine energy or in form of Shakti actually exists in every human being. There are 3 nadis emanating from the Muladhara. The Ida is basically the left part of the left nadi is known as Ida. The right nadi is known as Pingla. And the central nadi is known as Shushumna. Now, these nadi are 3 parallel lines. They join at 2 places. And the lowest part is known as Muladhara Chakra. And the topmost is the Sahasrasara Chakra, given by 1000 lotus petals. And here it is 4 lotus petals. So the creative energy rises from the Shushumna, that is the central thing, and slowly and steadily it rises and falls. This is not like that it will continuously rise and fall occurs. And through pranayama this is done, and how it is done I will not tell. This is what gurus will teach you. Don't try to practice it because people go mad practicing this without guru. It will rise. After rising and rising, if it goes here Shiva is there, okay, and when Shiva and Shakti will unite with one another, then the Jiva will get moksha. Complete individuation has occurred. And in the middle path, some level of individuation happens. In these areas, when we say a particular first chakra, this is the Muladhara, this is the Sadhisthana. Sadhisthana chakra has actually arrows, you can say, or it has opened up. Then what will happen? A new form of thinking process will occur. Individuation in a different level will occur. Then basically the Nabhi chakra, Anahata chakra, Vishuddha chakra, okay, Ajneya chakra, and Sahasrasara chakra. Manipur is there. Here is the Manipura. They have not given it. This is the Anahata. This is the Manipura, Vishuddhi, Ajna chakra. The thing is not given properly here.
Right. This is good. Basic idea is given. First is the Muladhara. It has got 4 petals of leaves. Next comes the Swadhisthana. It has got 6. Okay. Then comes the Manipura. Manipura has got your I think so 12. I think so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 is there in the Manipura. Then comes the Anahata. Then Vishuddhi. Then Ajna, Agya Chakra. Then comes your Sahasrasara, the final one. It is then the top of the cortex. And all this chakra is there with some kind of gland. Gland is also present. For example, here the ovaries and testis is present. Then here there are some adrenaline or many adrenaline gland and all. These are present in this part. You can see the reference. Now, these are the various levels of individuation. Don't think that these are there in this spine. It is there in your mind. It is the various layers of the mind that is going after individuation. So this is the Kundalini system. Now, here you see the Sri Chakra. Sri Yantra we say all the time. Now, what is this? This is used in the home. Now, Jung has done a lot of research on this on this yantra. So, first of all, let us understand what is Sri Yantra. Now, Sri Yantra consists of 9 interlocking triangles. We can see in the figure that it has got 9 interlocking triangles, 5 downwards and 5 upward. And it has got a, as we have already discussed, a central point known as Bindu. That is why Bindu, Nad and Bindu are the most important part of Tantra process. What is Nada? Nada is the active form. Bindu is the where all the individuations meet. Nad is the thing that creates the opposites, channels the opposites, and Bindu creates the individuation. This is the Nad and Bindu concept. Now, Jung has given an analysis on the Sri Yantra. Jung said that Sri Yantra is the ultimate representation of the union of the opposites. And it is also interlocking of Shiva and Shakti. Triangles, these 5 triangles come, opposite triangles meet, and this is the unification of Shiva and Shakti. This is the integration of animus and anima. We have discussed what is animus and what is anima, the yin and the yang. Yin and the yang is the animus and anima. It has come together. Now, Jung said that the practitioner walks the yantra from the periphery, where he starts from the periphery or the circumference of the circle or circumference of the square, and he makes his journey towards the center of the square. And this is the best, according to Jung, it is the best representation of individuation. People come from a complete, actually they will start their journey from this periphery, and slowly and steadily they will move into this Bindu, where there will be fragment. Here you see so many fragmented parts are there, and there you will come into the individuation, where your shadows and your all the opposites, basically, not only shadow, anima, animas, ego, shadow, persona, shadow, okay, all these opposites will come to a
individuation, and you will realize your complete self. Next, Jung's idea and Jung's analysis of Sri Chakra Sambhara Yantra. We will understand Sri Chakra Sambhara Yantra is there in the Tibetan mandalas. I have not given the photo here, but it is there. This is another kind of Sri. Actually, this is used in Tibetan systems, Sri Chakra Sambhara. Another is the Chakra Yantra. Chakra Yantra is basically, you can see lotuses. Many yantras are there, not only one. Each chakra is actually given a lot of, you see, these are the Chakra Yantras. All these 7 chakras are there, these are known as Chakra Yantras basically. This also, according to Jung, actually represents the, it starts from the square that is there in the base of the spine, which is the quaternary principle. What is the quaternary principle? 4 kinds of thought is there. Again, thinking, feeling, okay, etc. So there Jung says that this material energy that is grounded in the Muladhara rises slowly and steadily and ascends through various chakras. This is the Kundalini Yoga. And it slowly and steadily materializes and individuates at the top of the crown of head. The crown of head, it individualizes. So material energy and spirituality, it is the, according to Jung, it is the juncture point where materialistic desires starting from here will meet the spirituality here. And that what will happen when the materialism will meet spirituality, then what will happen? A material jiva, a jiva who is the soul who is actually stuck in the material world, will realize the divine and will become free. This is the idea as per Jung. And for going through that, for doing that, it will go through a lot of states of mind where individual levels of individuation would occur. This is the Navagraha Yantra. Navagraha Yantra is also very important. Navagraha Yantra, let us see. So these are all scientific, means actually psychologically, psychoscientific, you can say. These are all psychoscientific things. Don't think these are meaningless, andhavishwas, people say. No, these are not andhavishwas. Now if somebody uses this to do some kind of andhavishwas, it is their problem, not the system. System has nothing to do about all this. Anyways, this is the Navagraha Yantra, you see. These are the Navagraha Yantras. You can search. Yeah. This is the Navagraha Yantra. 9 grahas are there, and each, it is not a yantra. This is the Navagraha Yantra. Yes. These are the Navagraha Yantras. You see, all the yantras have something common. Either they are squares, or they are, this is triangle, 2 triangle, opposite triangle. This is also the symbol of Judaism, Star of David. Okay, Star of David is also, it is of that font. Triangle is there. Okay, squares and triangles and circles, these are present. Now, what is the meaning of this? And according to Jung, the meaning of Navagraha is basically why Jung said, or Jung analyzed why these are 9 in number, and why there is
these are placed in squares. So what Jung thought that the planetary things that we see here is not actually the planets outside. It is the archetypes, 9 type of archetypes, or universal imprints of behavior. There are 9 types of major behavior according to Jung. Okay, and these are some of the archetypes. Some of the 9 archetypes are the main archetypes, and these archetypes come to human life in synchronicity with time, and that is the idea of astrology, not the movement of the planets. It is synchronized with the planets, but these are the archetypes present within us. The grahas are present within us, not outside. Their motion, the motion of these archetypes, or their coming and going, rising and falling within our psyche, is synchronized with the planets, and they have been calculated in that way. But the planets is not affecting us in that sense. It has been understood by Jung. So this is a very big study of Jyotish, Falit Jyotish basically. Falit Jyotish is basically synchronicity of this Graha and Atigraha. And Grahas are not something outside, it is there within us, and it is the archetypes. Next is the Kali Yantra. This is the oldest symbol of Sanatan Dharma. Why? Because in Baghor stone we come across the Devi whose symbolical form is of this Kali Yantra. Very important thing. It's one of the oldest, 12,000, almost 12,000 years old stone people used to rever. And this kind of Kali Yantra and this inverted triangle is found in many systems of the world. And we will understand what is the meaning of this from the idea is that Kali represents the type of the archetype, the mother archetype. It represents the mother archetype. And what type of mother? The dark side of the mother, the shadow mother, mother that devours, the mother that punishes. That is the Kali. Now, Kali Yantra is the terrible mother. So, Kali means what? She represents the dark, destructive side of the feminine that one confronts. Kali's fierce appearance, skull is there, blood is there, severed heads are there. It forces the ego to confront its own morality and primal instincts. Jung believed that only by accepting Kali's darkness, a person could achieve genuine spiritual liberation. That is why Kali it is said that Kali directly gives moksha. Why? The moment you individuate Kali's tendencies, moksha comes to you. So this is a very important understanding of Sanatan Dharma, what Kali actually means and what Kali Yantra actually means. So this is very important idea. Without knowing, these are not superstitions. Now, Kali Yantra, I will analyze the Kali Yantra in somewhat details. The outermost in the Kali Yantra, you will see there is some gate of opening. There are some gates of opening. These are T-shape. This T-shape. This T-shape parts are known as Bhupuda. Bhupuda means these are the gates. 4 gates are there. And these represents the ego's entrance to the unconscious mind. Ego enters the unconscious mind. These are the doorways through which one must pass to begin
inner transformation. Because if ego does not realize your mind, okay, realize the unconscious mind, then your transformation is not possible. It will live in the consciousness alone. It will have to understand, it will have to entry into the unconscious mind. This T represents the entry into the unconscious mind. From here, it enters this part. This is known as what? Bhupura. Next, the 8 lotus petals. These 8 lotus petals are the principles of Prakriti. I have already told you last time that there are 8 modes of thinking. Okay, and those 8 modes of thinking are represented by these petals, basically these 8 petals. What is the actually TETI, FEFI, NENI, SESI? These are the 4 modes of thinking. This is slide number 31. And there are 8 modes of thinking. I think I have not written the 8 modes of thinking. No, 8 modes of thinking. I have not made the slide. But I have discussed about the 8 modes of thinking. Bhubji have already explained. Now, this Bhupura is entry of the ego to the inner consciousness, the inner unconscious mind, basically. It enters the inner unconscious. These petals, all the 8 petals, represent what is known as the 8 modes of thinking. Okay, this is it represents the Prakriti. That is why mother is also associated with Prakriti. And these piercing these petals, you will have to pierce this. When you are in the meditation, you are in the Kundalini Yoga, you will pierce these petals in meditation, and it signifies moving beyond the worldly identity. When you pierce these petals, when you are in the Kundalini Yoga, your guru will tell you, now pierce the petal with like a needle. You pass through the petals like a needle. Then you will understand this is nothing but it is moving beyond the worldly identity. You are moving beyond the Prakriti now. This is the idea. Now, in Kali Yantra, you see there are 5 concentric triangles. And each concentric triangle represents the Panchakosha, the 5 sheaths that actually covers our body. And it is not my interpretation, it is what Jung said. The 5 concentric triangles represent the 5 sheath koshas of human consciousness. And it is inverted downwards, down pointing. It symbolizes feminine regenerative power. It is the power of the anima. Also, it gives the idea of the descent of grace. Grace comes. Grace should come. Okay? Grace is flowing the opposite way. And the central bindu is also there, you see. If you see it very well, it is the center point of the storm, according to Jung, where the absolute reality, that is Kali, is unified with pure awareness, Shiva. At this center point, you see, this is the thing that is the bindu, where Shakti unifies with the Shiva. This is the Kali Yantra. Next, we will understand the Trimurti, Hindu deities in analytical psychology. So we have taken few of the Devi and Devatas: Trimurti, Shiva Shakti, Kali the terrible mother and shadow, Ganesh and Krishna.
What are those? Now we will understand them one by one. First, we understand the Trimurti. Trimurti, the Trinity. Why? Jung analyzed the Hindu Trinity through his theory of quaternity. He gave the theory of quaternity, and he established, and he actually understood analyzed the Trimurti in this way. The Brahma is the creator. It represents the emergence of the cosmos from the formless unconsciousness. He is the self in his initial and creative stage. So Brahma is basically the self in the initial creative stage. Don't confuse with the self of or Atman of Advaita Vedanta. That is a different thing. Here the Jungian idea or understanding of the Trimurti. So according to Jung, Brahma represents the creation of the universe from the unconscious, formless unconscious, and he is the self in its initial and creative stage. It is the creative stage of the self. Vishnu is the preserver, symbolized the sustaining power of the consciousness and the maintenance of the psychic order. So I told you that self contains opposite things, and it creates considerable tension. In universe also, this kind of thing is seen. Opposite things are there, creates a lot of tension in the universe. Universe is stretched because of this tension. Opposites are working because of vacuum energy and all. We see that the universe is now getting stretched with time. Similarly, Jung's self is also under constant forces of disruption because of the opposites that is present in the self. And Vishnu is the power of the self that keeps the opposites together, preserves the self. Shiva is the destroyer. It is represented as the necessary force of transformation and destruction of the old ego to allow for rebirth. What happens? The old ego must go away. What old ego is there, it is unindividuated ego. It should go away, and new ego should come. And in that new ego, a rebirth occurs. It is the transformation, it is the destruction. Our present ego will be destroyed. New ego will be created. This is the rebirth will occur. Shiva creates the rebirth, basically, according to Jung. The deity actually responsible for our rebirth is the Shiva, because he, with the necessary force of transformation, the old self, old ego is destroyed and allow for a new ego self. And if Shiva destroys the complete ego, then the self is completely realized and you get moksha. Now, there is another point, quaternary. Quaternity is there. Another thing is left behind. 4 points should have been there. 1 point is living. There is no one more point. And what is that? This is the missing fourth. The missing fourth is nothing but the Shakti, the feminine principle, according to Jung. This feminine principle actually is responsible for transforming the Trinity into a quaternity. It is Trinity is psychologically incomplete without the feminine force of Shakti. You may say in that way.
Shiva and Shakti. Now, what is Shiva and Shakti? We have discussed this, and it is the Jungian concept of CGG, union of the opposites. Shiva represents the pure, unchanging consciousness. This is the masculine principle. Shakti represents the primordial energy, nature, and change, the feminine principle. The union, their divine dance, Shiv and Shakti dances, mirrored the integration of the anima and the animus. When the anima and the animus, the female principle and the male principle in any individual actually meets, that will lead you to complete self. It is a state beyond the duality, the state of anirvachaniya ekam, anirvachaniyam ekam, or the duality will go away. Then this is the idea of Shiva and Shakti. What is Kali? Kali we have understood. Kali is the terrible mother, the shadow. Jung and his followers identified Kali as one of the most powerful representation of the shadow, the terrible mother archetype. Mother, again, let me remind, mother has got two phases. First part of the mother is the benevolent mother, represented by Durga or Lakshmi. And the second part of the mother is the terrible mother, the mother that actually devours or punishes, is the mother that is Kali, destructive one. It is not evil. Kali is not evil. It destroys the evil, in fact. Yeah. Now, the confronting the shadow. The Kali's fierce appearance, the skulls, blood, severed heads, forces the ego to confront its own mortality and primal instincts. Okay, when you see at Kali, you will be fearful, and the fear comes from the primal fear of death. The fear of death comes, and when you face the Kali, you become fearless because your primal fear of death goes away. Mrityor mokshiya mamritat. Om Trambakam yajamahe sugandhing pushtivardhanam urvarukamiva vandanana mrityor mokshiya mamritat. So from mrityu you get moksha. And Jung believed that only by accepting Kali's darkness, a person could achieve genuine spiritual liberation. Next, and the final deity we will take today, although we can give several complete streams on the psychoanalysis of the deities, but we are doing in as a tip of the iceberg fashion. Ganesh and the Krishna, very important deities. Jung interpreted Ganesha as the form of the divine child archetype, symbolizing the potential for unity. It is the potential for unity and synthesis of conflicting psychic elements, that is human and the animal. Okay, these are completely different things. Human and animal are completely different things, but it is a synthesis. Synthesis means individuation of the opposite qualities. This is what is known as the idea of tattu samannayat. The conflicting things will come towards, and you will have to embrace that conflicting things. For example, one such idea I'll give you, that what was the nature of light? People thought in the ancient times. People thought that light was like particles. Some people thought light was like wave. And these two schools of thought fought with one another for hundreds of years. Some were saying light is particle, some were saying light is wave. Then what happened? Modern studies of light have shown light have got dual characteristics. Individuation. We have understood that
a right model of light should have two characteristics. They are both wave and particle. That is the idea. This is known as individuation. And you see, after individuation, we have understood the real nature or structure of light and also electron on other matter. This is one individuation, idea of individuation. Now, Ganesha is basically a synthesis of opposite things. Krishna is manifestation of the divine self. He is the divine mentor who guides the ego. Ego is represented by Arjun. Arjun is ego according to him. Through the internal conflicts of the shadow, and Arjun has got, the ego has got a lot of conflict in the shadow area, and guides him towards the individuation, that is duty, that is dharma. So Krishna, the self, or the wise old man, you can say, guiding Arjuna through the internal conflicts of the shadow and teaching him dharma towards individuation. So Sri Krishna should be seen in the light of a teacher. And Arjun's chariot has got 5 horses, everybody know. And what is the 5 horses? Pancha-indriya. So the 5 horses are the 5 sense organs. Arjun is the ego. Krishna is the totality of the self, who teaches ego towards a complete individuation, realization, self-realization. So this is the complete. I have completed my. अच्छा, कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अद्वैत जी, आपने आज इसका जो है पूरा जो है निष्कर्ष निकाल दिया, और इसीलिए मैंने जो है आपको बीच में नहीं रोका, क्योंकि आज इसका पूर्णता को प्राप्त हो जाना बहुत आवश्यक था। अगले एपिसोड से हम जो है मलेच्छों के और विरोधियों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। आज हमने जो ये व्हेन शिवा मेट्स युंग मेट्स शिवा का जो 7वां एपिसोड पूर्ण किया। यहाँ पर हमने ये बताया कि सनातन धर्म में जो कुछ भी है, किसी भी मार्ग से आप अगर सच्चे मार्ग में हो या आप जो है वास्तविक खोज की ओर हो, तो आपका अंतिम छोर, आपका लक्ष्य सनातन धर्म की ही मान्यताओं की ओर पहुंचेगा। और बहुत ही खूबसूरती से युंग ने साइको एनालिसिस का सारे सिरे जो है सनातन धर्म की मान्यताओं से, देवी देवताओं से और शिव से, शक्ति से, माँ काली से, गणेश से, शिव कृष्ण से और अन्य प्रकार के देवी देवताओं से भी जोड़ दिया। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि विरोधाभासी चीजें, जैसे कि शिव का गले में जो भुजंग है वो विषधर है, और शिव का जो सवारी है वो नंदी है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। नंदी जो है शक्ति का, सौम्यता का प्रतीक होते हुए जो है एक आधारभूत जो परिलक्षण देता है, और जो भुजंग है वो हिंसक और विषैला परिलक्षण देता है। तो ये जो विरोधाभासी चीजें एक साथ रहती हैं, इसका बड़े अच्छे से चित्रण यूंग के माध्यम से आपने किया है। अब मैं, चूंकि ये जितना भी इंग्लिश में आपने बोला है, आज इंटरनेट के कमजोरी के कारण मैं आपको हिंदी में एट ए टाइम ट्रांसलेट नहीं कर पाया। आई ट्राइड, बट वो इंटरनेट इतना कमज़ोर था उस समय कि जो है वो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अगले एपिसोड में इसको जो है नट्स एंड सेल्स में मैं हिंदी में पूर्णतया जो है आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज मैं कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब से बात करना शुरू करता हूं। सबसे पहले सिद्धार्थ भाई हमारे पास आए हैं। सिद्धार्थ भाई से मैं बात करना चाहता हूं। सिद्धार्थ भाई, स्वागत है आपका। हाँ सर, बताइए सर।
कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सिद्धार्थ भाई। आप बताएं कैसे हैं। सर मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपने उनको जो है ना पास्टर को मैसेज किया था, ईमेल किया था, ईमेल? पास्टर को जो ईमेल आईडी आपने दिया था उसमें कोई त्रुटि है। मेल रिवर्स हो गया था। कोई जो है शायद किसी स्पेलिंग का कुछ तो मिस्टेक होगा। उसके बाद फिर मैं बिजी था तो उसको मैंने फिक्स करने की कोई टाइम नहीं मिला। मेरा कुछ चल रहा है अभी एग्रीमेंट वगैरह का काम, तो उसमें बिजी था मैं। इसलिए नहीं कर पाया। अच्छा, एक सेकंड रुकना जरा। त्रिपाठी जी ने पूछा है कि क्या शिव जी की कोई पुत्री थी। हाँ जी, शिव जी की पुत्री थी। और बहुत ही पावरफुल उनका जो है पूरा परसोना था। और इस पर भी एक दिन स्ट्रीम की जाएगी। जी सिद्धार्थ भाई। हाँ हाँ, तो सर अभी आप देख लो, अभी टाइप करके देख लो कि अ, अभी आपका ना स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो टाइप करके अभी देख लो, अभी देखना है तो आपको। हाँ मैं देखता हूँ। आप एक बार फोन लगा लो उनको। सर रात के 12:45 हो रहे हैं, अभी फोन कैसे लगाऊंगा सर? कल ही लगाऊंगा ना मैं तो। हाँ, ये भी एक समस्या है। तो फोन लगा के कैसे कनेक्ट करोगे? मेरा जो ये क्या बोलते हैं, टेलीग्राम आईडी है वो ले लो आप। टेलीग्राम आईडी? वो लगा के अच्छा। मैं आ, मैं आप टेलीग्राम आईडी दे देता हूँ, उसमें कनेक्ट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, उसमें आपका बता दीजिए आईडी क्या है आपका। मैं टाइप कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, कीजिए टाइप। हाँ, ये मैंने प्राइवेट चैट में डाला है ना। हम्म, उनको बोलिए कि टेलीग्राम में मुझे कॉल कर लेंगे, या उनका टेलीग्राम आईडी कोई हो तो दे दे। ये मैंने दे दिया आपको। ठीक है, तो इसमें कनेक्ट हो जाएंगे तो बात हो जाएगी, क्योंकि बात होना लाइव जरूरी है। ठीक है। ठीक है ठीक हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है ये सर। बेस्ट सोल्यूशन है। ये कर लेंगे तो हमारी बात हो जाएगी, फिर हम फिक्स करते हैं। और आप, अगर मैंने वो बोला था कि नेक्स्ट कोई भी एक डेट डिसाइड करके अपन कर सकते हैं, तो उन्होंने कोई डेट वगैरह दी क्या आपको? सर मैं आपको उसी दिन बात हो जाता। मैं आपसे और ये ईमेल में कहा था, आप मुझे ईमेल का कंफर्मेशन जवाब दीजिए, फिर अभी मैं कॉल लगाता हूँ। मैं आपको ईमेल किया था, अब मुझे कंफर्मेशन को भी कुछ नहीं, वो जवाब ईमेल में दिए। मुझे, या तो मुझे टाइप करने में कोई मिस्टेक हो गई, या फिर आपने जो दिया है उसमें से कोई एक आध अक्षर या कोई ऐसा कुछ है, कैपिटल में या स्मॉल में कुछ भी होगा, उसकी वजह से वो ईमेल डेस्टिनेशन में पहुंचा नहीं था। ठीक है। अच्छा, पहुंचा हाँ, नहीं था। और जब मैं मेल मेल किया था उसी टाइम पे कुछ तो मुझे फोन ऑन आ गया था, कुछ ऐसा हो गया था कि मैं उसमें बिजी हो गया था, फिर उसको फिक्स भी नहीं कर पाया दोबारा से मैं। ये हो गया हम्म, था। मैंने टेलीग्राम आईडी दिया है, ये सबसे बेस्ट वे है टू कनेक्ट। ठीक है। टेलीग्राम दिया है उसमें, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, टेलीग्राम आईडी भी चल ठीक, मैं बोलता हूँ मैं उनको। ठीक है जो है, हम्म लेकिन हम्म। फिर उसको बोलने का लेकिन मौका मिल जाएगा उनको। मैं फोन नंबर दे चुका हूँ, ईमेल आईडी दे चुका हूँ, उसके बाद भी ए, भाई, मेरी बात सुनिए सिद्धार्थ भाई। मैं इस समय बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। आप देख रहे हो कि ऐसी इंटरनेट मेरा भी ऐसी जगह पे हो कि काम नहीं कर रहा है। तमाम ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम प्रायोरिटी पे नहीं लिया। प्रायोरिटी पे मेरे और दूसरे काम है, लेकिन ये होगा। ठीक है। जब भी हम्म, वो चाहेंगे, अब जैसे टेलीग्राम आईडी दे दिया, यहाँ पर बात हो जाएगी तो हो जाएगा। उनका टेलीग्राम तो होगा ही ना, फोन नंबर है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, आपका तो टेलीग्राम होगा, आप कनेक्ट कर लेना ग्रुप। आप वो और मैं ग्रुप बना लो उस टेलीग्राम में, जो है मुझे कनेक्ट कर लेना। ठीक अच्छा है, अच्छा ऐसा, तो आपके ठीक है। सामने ही बात हो जाएगी एनी टाइम। हम्म, ठीक है सर, चल ठीक है उनके। ठीक है, हाँ तो हाँ। पूछता हूँ उनका है होगा, तो चल पूछता हूँ। जी अब जी जी। अब मैं कुछ अपने क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। कुछ देर हाँ, पहले पूछ अभी लीजिए।
इंजेक्शन दे रहे थे ना, तो अद्वैत जी बोले थे कि अपने बच्चों को ओनली लव करना, अपने बच्चों को जो है बिगाड़ना या स्पॉइल करना होता है, ठीक है जो है, ऐसा क्या अद्वैत जी बोले थे। तो सर उस हिसाब से मैं इसी बात को अपनी ऊपर लेते हुए पूछना चाहता हूँ। मैं सर जो है एक ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, बचपन से धार्मिक माहौल में देखते आया, लेकिन क्या है, कभी मेरे पिताजी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि तू भगवान के सामने हाथ जोड़, घंटी बजा, फूल डाल भगवान के ऊपर। कभी पिताजी ने फोर्स नहीं किया। और जो मेरे चाचा है, मेरे चाचा मेरे पिताजी को इस बात के लिए जो है ना बुराई करते हैं कि तेरे को अपने बच्चे को ये सिखाना चाहिए था, वो सिखाना चाहिए था, तूने नहीं सिखाया, इसलिए तेरा बच्चा नास्तिक बन गया है। ऐसा-ऐसा जो है मेरे चाचा मेरे पिता के ऊपर आरोप लगाते हैं, ठीक है? और ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं, अपने बच्चे को बचपन से धार्मिक बनने के लिए ट्रेन करते हैं। अगर वो नमाज़ पढ़ने से मना करे, तो उन्हें दंड देते हैं। वो दंड तुझे भी देना चाहिए था अपने बेटे को करके। तो सर ये बताइए, मेरे पिता ने बचपन से मेरे साथ ना सही किया है कि नहीं किया है कि वो मुझे अपनी खोज छोड़ दिया कि रमन, अपनी जोड़ना हो मत जोड़ो, हाथ जोड़ना हो तो जोड़ो। क्या किया मेरे पापा ने सही किया? ये बताइए। देखिए, आपके पिताजी ने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। उन्होंने आपको धार्मिक माहौल दिया और उस धार्मिक माहौल में आई एम श्योर कि उन्होंने परमात्मा की व्याख्या, पूजा पद्धति, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, सारे विषयों के बारे में आपको अवगत कराया होगा। तो हाँ, इतना ही कराना होता है, व्यक्ति को मार्गदर्शन करना होता है, उसको बाध्य नहीं करना होता। ठीक है। चाचा जी हुँ, जो बोल रहे हैं वो आउट ऑफ इमोशन में बोल रहे हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप गलत मार्ग में चले गए हो, आपका जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तो वो छटपटाहट होगी चाचा जी के, इसलिए वो ऐसा बोल रहे होंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चूंकि आपको इतना अच्छा माहौल मिला है बचपन से, तो कुछ दिनों का ही भटकाव है आपके जीवन में। आने वाले अच्छा, समय में आप जो है अपने सत्य मार्ग पर वापस अडिग हो जाओगे, आप वापस परमात्मा के सानिध्य में चले जाओगे, परमात्मा आपको अपनी गोद में अपने सानिध्य में ले लेंगे। ये हुँ, मेरा दृढ़ विश्वास है। आपके साथ बात करने के बाद मुझे इन चीज़ों का एहसास और आभास होता है। नंबर 1 बात। अब पहला हुँ, जो प्रश्न का हिस्सा था, आपने कहा था कि अ, अवधेश जी ने ये बताया कि पिता यदि केवल प्रेम करे अपने पुत्र से तो उसको बिगाड़ रहा होता है। ये बिल्कुल सत्य है। पिता को पुत्र को सही मार्ग दिखाने के लिए कई बार शक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। कई बार जो है उसको मतलब कड़ाई के साथ उसके साथ भी पेश आना चाहिए जब बच्चे की परवरिश की जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 6 साल तक या मैक्सिमम 7 साल या 8 साल तक बच्चे को प्रेम से चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सिखाना चाहिए और जैसे ही 6 साल का हो जाए तो बच्चों में उद्दंडता होती है। बच्चों में अनुशासनहीनता का स्वभाव होता है कि यदि अनुशासन में उनको बार-बार ना लाया जाए, तो वो अनुशासनहीनता करेंगे क्योंकि उनका स्वभाव चंचल है। उनको हुँ, वो अभी सीख रहे हैं सारी चीज़ें, उनको मालूम नहीं है। तो ऐसे में 6 साल के बाद अनुशासन में उनको रखने के लिए ये हमारे शास्त्र कहते हैं, कई पुराणों में और कई जगह ये बातें लिखी हुई हैं, मैं वो कोट करके कह रहा हूँ कि उनको जो है 6 से 12 साल की उम्र तक उनको जो है अनुशासन में रखने के लिए यदि छड़ी से दंड भी देना पड़े थोड़ा बहुत, लेकिन उसका भी प्रावधान है कि हथेलियों में केवल, ठीक है? अच्छा। हुँ, हुँ, हाँ, कमर के नीचे बैक साइड में और हथेलियों में उनको थोड़ा-थोड़ा जो है जैसे हमारे गुरुजी मारा करते थे हथेलियों में अगर होमवर्क करके नहीं ले जाते थे। तो ये सनातन ग्रंथों की पद्धति है कि ऐसे करके उनको उतना कि जितना वो सह जाएँ और उनको जो है ये अनुशासन में रहने का जो है प्रक्रिया उनकी शुरू हो जाए। तो वो 6 से 12 साल तक की उम्र में जो अनुशासन में रखा जाता है, उससे बच्चा जो है आने वाले पूरे जीवन में अनुशासन जीवन पर्यंत करता है।
जैसे गुरुकुल की विषय में कहा जाता है कि फिर सुबह जल्दी उठना, ध्यान, प्रातः नित्य कर्म करके ध्यान आदि करना, पूजा पाठ करना, और उसके बाद अपने अध्ययन करना, अपने दिए हुए पाठ्यक्रम का, और उसके बाद जीवन के और जो अनुशासित नियम हैं। इसीलिए हमारे गुरुकुल में जब जब 12 साल के ऊपर हो जाते हैं, या 12 साल तक भी, 6 से 12 साल तक भी भिक्षाटन करके ही जो है अपना जीवन यापन करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो राजा का भी बेटा क्यों ना हो। इसके कारण ये होता है कि अंदर का ईगो खत्म हो जाए, अंदर का ईगो आपके समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जब भिक्षा लोगे तो आपके अंदर जो भी संकोच है, ईगो है, आपका जो है अहम है, वो सारा का सारा जाता रहेगा। तो जीवन पर्यंत हानि लाभ, यश अपयश, और जो जो मान सम्मान और मान अपमान आदि जो विषय हैं, इनमें समभाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये दो बड़ी अच्छी चीजें सनातन धर्म में थी, और उन्हीं का अनुपालन करने के लिए था। लेकिन जब व्यक्ति विवेकवान हो जाता है, यानी उसका गुरुकुल समाप्त हो जाता है, 24-25 साल का वो हो जाता है, तब तक तो उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उसके बाद वो अपने मार्ग को स्वयं चुनता है। अब वो जो है वर्णाश्रम व्यवस्था में जब आएगा तो वर्ण अपना स्वयं चुनेगा, उसको कार्य क्या करना है उसको स्वयं चुनना है, और उसकी स्वेच्छा से जो कुछ भी चुनेगा उस वर्ण का वो कहलाएगा। ये उसके लिए भी वो स्वतंत्र है। अपना जो है ध्यान भक्ति या ईश्वर को प्राप्त करने का क्या मार्ग चुनेगा, वो भी उसका अपना स्वयं की इच्छा है, स्वयं का चुनाव है। उस पर भी कोई बाध्यता नहीं है। केवल और केवल इन 25 सालों में शुरू की आपकी जो शिक्षा पद्धति, उसमें आपको केवल मार्गदर्शन दे दिया गया है। अब आप चुनो, आप स्वतंत्र हो। जीव की स्वतंत्रता इसी को तो कहते हैं सनातन धर्म में, जिसे दर्द है। जी, जी, जी। सर वो समझ गया आपकी बातें। अब जैसे कि इस्लाम को मेरे प्रवृत्ति से जोड़ते हुए मैं कुछ बात जो कहा था ना, उसके ऊपर आपने जवाब अभी नहीं दिया है। जैसे बताया था कि मुस्लिमों में ऐसा होता है कि बच्चे नमाज पढ़ने से मना करे, अल्लाह की इबादत करने से मना करे, तो उनके पिता उनको दंड देते हैं। लेकिन मैं जब हाथ जोड़ने से मना किया, पूजा पाठ में शामिल होने से मना किया, ठीक है जो है, तो मेरे पिता ने मेरे को दंड नहीं दिया। तो ये मुस्लिमों से तुलना करते हुए बताइए, क्या मेरे पिता ने मेरे संग सही किया? और क्या एक मुस्लिम अपने बच्चे के संग गलत करता है? ये बताइए। बिल्कुल, आपके पिता ने बिल्कुल सही किया, और मुस्लिम अपने बच्चों के साथ इस परिप्रेक्ष्य में गलत करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सामाजिक ज्ञान लेने के लिए, आपकी योग्यता को बढ़ाने के लिए केवल आपको दंड देने का या आपको बाध्य करने का, वो भी 6 से 12 साल तक की उम्र में, उस पद्धति में, उस ढर्रे में ढलने के लिए आपको थोड़ा बहुत दंड देने का प्रावधान है। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, इबादत करने के लिए, जो भी उनका अपना एक सिस्टम है, उसके लिए यदि किसी को डराना धमकाना है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे जो है किसी भी प्रकार से उनको बाध्य किया जाए, वो सर्वथा गलत है, वो अनुचित है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण से आप ये देखते होंगे कि वो उनको अल्लाह का डर, इबादत नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, इबादत नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, नमाज कायम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वैसा तमाम तरह की जो जो उनके यहाँ वो चलती है ना, वो इसका ही कारण होता है कि वो लोगों के दिमाग में ताला लग जाता है। वो रैशनल सोच से कहीं दूर चले जाते हैं, और फिर वही लोग आतंकवादी बनते हैं। वही लोग जो है जिहादी बनते हैं। फिर वही लोग जो है रैशनल चीज़ों से बहुत दूर चले जाते हैं। वही लोग तरक्की से कहीं दूर चले जाते हैं। वो एक सेट पैटर्न में चलना शुरू कर देते हैं, तो वो उनके साथ अन्याय हो रहा होता है वास्तव में। जी। हाँ, उनके संग अन्याय होता होता है, आपकी ये बात मैं समझ गया। लेकिन जो मेरे पिता का कहना है ना कि इंसान को उसके दिल की प्रवृत्ति के ऊपर छोड़ दो, ठीक है? उसकी अगर इच्छा होगी और भगवान को पाना चाहेगा, तो एक धार्मिक से भी बड़ा धार्मिक बन के ये उभरेगा। और प्राप्त नहीं करना चाहेगा, तो कभी प्राप्त नहीं करेगा। तो क्या वही बात मेरे ऊपर लागू होता है कि अगर मैं प्राप्त करना चाहूँगा, तो बहुत बड़ा धार्मिक बन के खुद मैं प्राप्त करना चाहूँगा। अगर मुझे अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ दिया गया है तो, या फिर मुझे अगर अपनी इच्छा को छोड़ दिया गया है,
तो मैं घनघोर नास्तिक बन जाऊंगा। क्या होगा इस संबंध में, ये बताइए। बिल्कुल सही है। आप आपके पिताजी ने जो कहा या आप जो कह रहे हो, बिल्कुल ये सत्य है कि जीव की स्वतंत्रता है। आपको केवल सत्य का मार्ग दिखा दिया गया है। आपको पता है कि वास्तव में आपकी यदि मंजिल एक अमुक शहर है, समझ लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है, और आपको हम्म, मालूम है दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर ही सत्ता का केंद्र है। ठीक है, आपको ये हम्म, सत्य बता दिया गया है कि दिल्ली का रास्ता ये है। अब वो दिल्ली के रास्ते में चलते चलते भटक कर आपका मन किया कि नहीं, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, वहां पर जो है मेरी गर्लफ्रेंड रहती है आगरा में, मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो आपकी अपनी इच्छा है, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने के लिए आगरा में रुक गए और दिल्ली आप नहीं गए। ठीक हम्म, है, हम्म, हम्म, तो हम्म, अब रास्ता बताने वाले की केवल जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब मंजिल तक पहुंचना तो आपका ही काम है ना। वो आपके लिए हाँ, दिल्ली पहुंच भी जाएगा तो आपके काम नहीं आएगा ना, उसके लिए तो आपको ही अच्छा। पहुंचना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से परमात्मा के गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपका उद्देश्य है और आपका ही कर्म काम आएगा, दूसरे का नहीं। चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, किसी का भी काम नहीं आएगा, आपका ही आएगा। आपके ही पुण्य आपके साथ जन्म जन्मांतर तक जो है ट्रेवल करेंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आपने नास्तिकता को चुन लिया है, सपोज कि आगरे में जो, आगरा में, मैं तो गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, या यूं कह लीजिए कि नास्तिकता वो दंश है जैसे वैश्यालय होता है। ठीक है, हम्म, वैश्यालय की लत लग जाए जिसे, या व्यभिचार की लत जिसे लग जाए, तो वो फिर, या शराब की लत जिसे लग जाए, तो उसको वास्तव में नॉर्मल बनाना बहुत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। तो आपके केस में वही है कि आप एक ऐसे शराबी बन गए हो, नित्य शराब पी रहे हो, यानी नित्य जो है अपने मन मस्तिष्क में नास्तिकता को लेकर चल रहे हो। तो आपको सही करना, सही मार्ग में लाना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। जी। ठीक है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर है और पेरियार स्वामी, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। इन्होंने दावा किया था कि हमने धर्म को जान लिया है करके, ठीक है। सब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो क्या ये नास्तिकता के राह पे आगे बढ़कर लोगों को लेक्चर देते थे, तो इनके लेक्चर की गलत थे? ये बताइए, इनको अच्छा, क्या आप बोलेंगे? अच्छा, मुझे ये बताओ, पहले पेरियार की बात कर लें। पेरियार को हाँ। महान कहने से पहले उसकी एक आध महानता की बातें बता दो। पेरियार ने नास्तिकता की उस सीढ़ी को चढ़ा था कि अपनी ही बेटी के साथ उसने शादी कर ली थी। इतने नीच क्या और था? गलीच इंसान को आप महान वेद बोल रहे हो? सच में शादी किया पेरियार था? ने सच में किया था? सच बात पेरियार ये ने है? हाँ, सच में किया था। अब जब एक नास्तिक आदमी है, उसका कोई सिद्धांत ही नहीं रह जाता, उसके बारे में पढ़ के तो देखो। उसके बाद वो आइडियोलॉजिकली इतना करप्ट था, इतना दिवालिया था कि हमारे सनातन ग्रंथों में जो चीजें नहीं लिखी हैं, उन उस झूठ को जबरदस्ती लिखकर ऐसी ऐसी पुस्तकें छापता था ताकि लोग जो है उसके झांसे में आ जाए। ठीक है, और आज भी कुछ आपके जैसे बेवकूफ लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। तो पेरियार का तो ये चरित्र था, तो उसको तो महान कहना या उसकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसकी वजह से उसको महान कहा जाए। वो केवल और केवल समाज के लिए धब्बा है, गंदी नाली का कीड़ा है, जो है टट्टी का ढेर है। ये शब्द मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन पेरियार का व्यक्तित्व ये है। तो उसकी Periyar तो बात आप छोड़ दीजिए। give a, जी, जी। I want to say आप something. अम्बेडकर बारे मुझे Periyar, आप। no. Listen, Periyar wanted to divide India into North India, South India. He wanted to make Dravid Nadu and remove all the North Indians from uh, South India. Is it a good thing or a bad thing? You are spreading racism. Is racism a good thing or a पेरियार, bad thing? अद्वैत जी, पेरियार रेसिज्म तो था ही। पेरियार जो है जिन्ना के साथ मिलकर, जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान लिया, वैसे ही वो जो है साउथ इंडिया को जो है अलग करके भारत के 3 हिस्से करना चाहता था। तो पेरियार, और उसके लिए बहुत सारे जो है गलत गलत हथकंडे उसने अपनाए थे, इसलिए सनातन धर्म को क्रिटिसाइज भी किया था। द्रविड़ और आर्यंस की थियरी को भी उसने ही हवा दी थी। अब आ जाते हैं अंबेडकर जी के पास। हाँ, हाँ। अंबेडकर जी एक महान व्यक्तित्व थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंबेडकर जी ने सनातन धर्म को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया है, या इवन किसी धर्म को उन्होंने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया है। अंत में उन्होंने, जैसे एक घर का व्यक्ति है, उसके साथ हम्म, तो उसकी नज़र में एक दुर्व्यवहार हो रहा है, घर का कोई मुखिया उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। वो बोलता है, यार मेरे साथ ना हम्म, करो हम्म, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगा, मेरे साथ ना करो नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगा। अब वो जो है
उसके लिए थोड़ा तो सॉफ्ट हुआ, लेकिन पूरी तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार करना उसने बंद नहीं किया, तो उसने वो घर छोड़ दिया। बस सबक सिखाने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। सनातन धर्म के जितने प्रवर्तक और जितने ज़्यादा हितैषी अम्बेडकर थे, कोई और उनके समकालीन रहा ही नहीं। और हाँ उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही वो घर छोड़ा था। इवन ये एक सामाजिक बुराई थी ना, भेदभाव वाली, ये सामाजिक बुराई थी। उनको मालूम था, अम्बेडकर जी के ही विचारों से मेरे अंदर और अद्वैत जी के अंदर भी ये बात आई कि नहीं, सनातन धर्म में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं होते। उन्होंने ये बात हमको सिखाई, लेकिन उनकी बात उस वक्त कोई मान नहीं रहा था, और बहुत एक बड़ा तबका था जो मुसलमानों और क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उसको कन्वर्ट करना चाहती थी, और इसी आधार पर करना चाहती थी कि आपके देखो भेदभाव हो रहा है, आप हमारी तरफ आ जाओ। तो अंबेडकर जी ने उनको रोक रखा था। टू लेकिन कंपेयर अ, टू सुन लीजिए कंपेयर अद्वैत जी, हाँ सॉरी अद्वैत जी, लेट मी कंप्लीट। तो अंबेडकर जी ने उनको रोक रखा था कि हम इसको ठीक कर देंगे, लेकिन जब नहीं हुआ तो उन लोगों का, उनके अपने लोगों का प्रेशर आया कि आप तो कह रहे हो, लेकिन यहाँ तो हमारे पास साथ भेदभाव हो रहा है, हम तो मुसलमान बन जाएंगे, हम तो क्रिश्चियन बन जाएंगे। तो उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ अंबेडकर जी बहुत ज़्यादा थे। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को बहुत अच्छे से स्टडी किया था, और उसको वो जानते थे कि ये लोग, ये बहुत बड़ा जो है फरेब है ये दोनों ही चीज़ें। तो उन्होंने सीधे सीधे सोचा कि यार बुद्धिज़्म जो है सनातन से निकला हुआ, सनातन का ही हिस्सा है। अगर ये वहाँ से निकल कर ये बौद्ध बन जाएंगे हमारे अनुयायी, तो कम से कम जो है ये मानव बने रहेंगे, इंसान बने रहेंगे, इनमें त्रुटि नहीं होगी, और सनातनियों से अलग नहीं होंगे, और उनसे लड़ाई नहीं करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, अंतर कलह नहीं होगी हमारे अपने लोगों में, और उनको अपना कुल गोत्र भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ये दूरगामी सोच के साथ अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन सनातन धर्म को कभी भी उन्होंने बुरा भला नहीं कहा है। तो अम्बेडकर और पेरियार दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की तुलना करके आप अम्बेडकर जी का अपमान करने की कोशिश ना करें। जी। yes always keep a distinction between Periyar and Ambedkar Sahab. Ambedkar Sahab, Baba Sahab was a reformer, social reformer. Periyar was a disruptor. He was a secessionist. I will say he was a secessionist. And another thing is that Ambedkar Sahab have defended Vedanta. Okay, he has defended Brahmanism. Brahmanism, not Brahmanism. He was against Brahmanism. Okay, he was actually against Brahmanism, but he defended Vedanta. Brahmaism, that he said that Hindu dharma, Hindu philosophy is divided into three strands. One is Brahmanism, that does chua chut and all this kind of untouchability, this kind of stupidity, janmana varna vyavastha. These are the Brahmanism. Okay, the Brahmins have all the rights and others don't have any rights on dharma. That is what Brahmanism is. He said another part of Hindu philosophy is Brahmaism. Only Brahma is the real. Okay, only Brahma is the truth, and the world is also truth according to him. That is Brahmaism. And another is Vedanta. According to him, Vedanta and Brahmaism are actually the basis of democracy. He told this in his Riddles of Hinduism. इवन Okay. बहुत सारे अपने संविधान के अनुच्छेदों में उन्होंने हिंदू ग्रंथों के सिद्धांतों का प्रयोग करके संविधान की अनुच्छेदों की रचना की है, और ये संपूर्ण वाङ्मय में उन्होंने उसका मेंशन भी किया है, और संविधान में भी उसको कहाँ से लिया गया है उसको उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है। तो अंबेडकर Also, जी का चरित्र और व्यक्तित्व बहुत ही महान था, उनसे तुलना किसी की नहीं हो सकती है। और आज की विडंबना देखिए कि पेरियार और अंबेडकर को एक साथ खड़ा करके कुछ लोगों ने सनातन धर्म को बांटने की कोशिश की है। जो कोशिश अंबेडकर ने जिस कोशिश को विराम देने के लिए अंबेडकर जी ने इतना बड़ा कदम उठाया था, आज बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच में लड़ाई करवाने के लिए नए तरीके के वामी बौद्ध पैदा हो गए हैं, और वो वामी बौद्ध जो है एक्चुअली उनको बौद्ध धर्म से भी नफरत है और सनातन से भी नफरत है। वो एक्चुअल में नास्तिक है, वामपंथी है, और वो जो है उनके इन महापुरुषों के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। पेरियारवादी धूर्त लोग हैं, Periyarwadi. वो अंबेडकर जी का नाम यूज कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध का नाम यूज कर रहे हैं सनातन धर्म में के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए। I have great respect for Baba Saheb Ambedkar. I don't have any respect for Periyar.
I consider him to be a son of a bitch. Openly, हाँ I'm saying. ठीक है, हाँ ठीक है सर, आप अच्छा, ओपनली और ये उसको बड़ा अच्छा एक कुत्ता कमेंट बोलते भी आया है, सुनो। हैं। सोहित बैसोदिया बैसोया जी ने बोला है, अगर डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं के खिलाफ होते तो संविधान में बुद्धिस्ट सिख जैन को हिंदू नहीं बोलते। देखिए, संविधान में बुद्ध सिख जैन आदि सब को हिंदू बोलकर ही संबोधित किया है। इसका मतलब वो खिलाफ नहीं थे। ठीक है सर, आपकी बात मैं सुन लिया, जो है ना अद्वैत जी उनको कुत्ता बोलते हैं पेरियार को, उनकी बात मैं सुन लिया हूं मैं। लेकिन सर ये बात बताओ कि अंबेडकर का पर्सनालिटी में कुछ तो था जिसके चलते पूरा महाराष्ट्र उनकी इज्जत करती है, वो मेरे को समझ में आता है। पेरियार स्वामी की पर्सनालिटी में ऐसा क्या चीज था कि पूरा तमिलनाडु उसकी इज्जत करता है? ऐसा क्या था उसकी नहीं, पर्सनालिटी में? ये झूठ है, ये झूठ है। पूरा तमिलनाडु कहीं इज्जत नहीं करता है। ये वामी बौद्ध टाइप के दो चार लोग ही हैं, गिने चुने। एक राजनीतिक पार्टी है जो जो उसने पेरियार ने बनाई थी, तो उसके डिसेंडेंट्स में ये जो क्या नाम है उसका, जिसने बोला था अभी कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, वो पेरियार के ही जो है चेले चपाटों की पार्टी है। एक वो पार्टी है केवल। और जिस तरह से वामपंथ भारत में एकदम एक संकुचित सिकुड़ा हुआ जरा सी जगह पे है, उसी तरह से पेरियार के भी लोग हैं बहुत छोटे से। पूरा उत्तर भारत मंदिरों, सनातन धर्म और जो है हिंदुत्व के से लबरेज है साउथ इंडिया पूरा। कहीं भी वो साउथ पेरियार इंडिया। का नामो निशान नहीं है। कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोगों को पूरा साउथ कहकर आप ये गलत उदाहरण ना पेश करें जी। ठीक है, और सर ये बताइए कि जिस प्रकार से जो है ना ये जो भी बौद्ध लोग जो है ना ऐसा आर्गुमेंट देते हैं बार बार, 3,000 साल की गुलामी, 3,000 साल गुलामी, 3,000 साल तक ब्राह्मणों ने हम पर राज किया, 3,000 साल तक ब्राह्मणों ने हमारा राज किया। तो सर इतिहास को देख कर बताइए आप कि छुआछूत, शूद्रों को गुलाम बनाना, अत्याचार करना, ये कौन से सन से स्टार्ट हुआ है? क्या ये सच में 3,000 साल पुरानी बातें हैं कि 2,000 साल पुरानी बातें हैं, 1,000 साल पुरानी बात है कि 500 साल पुरानी बात है? आपने किस सुनिए, आपने हमारा मीमांसा वाला एपिसोड देखा था ना? कुमारिल भट्ट के समय से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, और ग्रंथों में उसका निरूपण करके लोगों ने छोटी मोटी चीजें ऐड करी कुछ राज्यों में। लेकिन पूर्णतया कभी ये भेदभाव सब जगह लागू नहीं रहा। ठीक है, कुछ कुछ पॉकेट्स में रहा। तो इसको उसी हिसाब से आप समझिए। संविधान के Shabar Swami and जी अद्वैत जी। Shabar Swami and Kumaril, these two are the culprits. हाँ, Jaimini was तो also after up to some जी जी, extent. हाँ हाँ, तो मैं वही बता रहा था अद्वैत जी, हिंदी में बताने दीजिए। तो ये साबर स्वामी, कुमारिल भट्ट, जैमिनी भी कुछ एक्सटेंड में जो ये लोग थे, इन लोगों ने शुरू किया था, तो उस कालखंड से हुआ था। लेकिन पूर्णतया कभी सब जगह नहीं रहा है। जैसे अभी भी भारत में वामपंथ है एक कुछ जगहों पे, अभी भी पेरियार को मानने वाले कुछ जगह पे है। लेकिन कोई बोलते कि पूरे भारत में 150 साल से पेरियार का है, या 150 साल से वामपंथ, या 300 साल से वामपंथ भारत में है, तो ये अन्याय हो जाएगा, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। अब रही बात कि जिनकी आप बात कर रहे हो कि 3,000 साल की गुलामी, उनका एजेंडा है ऐसा कहकर लोगों को भ्रमित करके अपने में शामिल करके हिंदुओं के खिलाफ सेना बनाना। ये मुसलमानों से भी ज्यादा खतरनाक हिंसक है लोग हैं। अच्छा, इनकी ये मंशा है कि अगर ये संख्या में बढ़ जाए या इनकी सत्ता आ जाए, तो मंदिरों को तोड़ के, मूर्तियों को तोड़ के, हिंदुओं का नरसंहार करके, इनको जो है खत्म करके अपनी सत्ता कायम की जाए। ये जितने भी पेरियारवादी हैं, जितने भी वामी बौद्ध हैं, ये न बौद्ध धर्म से को मानते हैं, न सनातन को मानते हैं। ये केवल सनातन को मिटाने के लिए बाबा साहब और महात्मा बुद्ध का नाम इस्तेमाल करके उनकी नाम के पीछे छुप कर ये एजेंडा चला रहे हैं। ये 4-5 साल से ऐसा करने लगे। इसके पहले जल जंगल और जमीन के का बोल करके नक्सलवाद करते थे। ठीक है, तो ये ये वो लोग हैं। कुमारिल भट्ट जो है ये कौन सन की बात हो रही है? ये कुमारिल भट्ट कब की बात है नहीं, ये? ये कुमारिल भट्ट जो है 4वीं शताब्दी में, या शायद उससे पहले भी रहे होंगे, तो तब की बात है। लेकिन ये विचार तब से आया था, लेकिन पूर्ण रूप से कभी भी नहीं लागू हुआ, आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। लेकिन छुटपुट घटनाएं हैं। होता क्या है कि लोग एजेंडावादी लोग क्या होते हैं कि कहीं एक लेट्स से, उदाहरण आपको जीवंत उदाहरण देता हूँ
कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, तो उसको आतंकवाद को डिफेंड करने के लिए आज भी टीवी चैनल्स पे बैठ के मुसलमान बोलते कि नाथूराम गोडसे को क्या कहोगे, वो भी तो आतंकवादी था। केवल एक घटना को रट रहे वो, ठीक है। और उसके काउंटर में जो हर साल 5,000 घटनाएं आतंकवाद की होती हैं पूरी दुनिया में, उसको काउंटर करने के लिए उनको केवल नाथूराम भी मिलता है। ठीक इसी तरह से एक दो घटनाएं हुई थी, उनको ही रट रहे हैं वो, उसी को जो है एक्सटेंड करके उसी से भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका मकसद कुछ और है। उन वामी बौद्धों का मकसद कुछ और है। उनका मकसद सीधा सीधा है सनातन धर्म को और भारत को कई टुकड़ों में बांटना, भारत को चाइना के अधीन कर देना। चाइना के एजेंट्स हैं वो। जो प्रॉक्सीज होती है ना, अमेरिका की सीआईए की प्रॉक्सीज अलग अलग देशों में काम करती हैं प्रोपेगेंडा के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं, वो अमेरिका की और जो है पोप की प्रॉक्सी के तौर पे काम करती है, पेंटागन की प्रॉक्सी के तौर पे काम करती हैं। ठीक इसी तरह से चाइना में वामपंथ पूरी तरह से हावी है और उस वामपंथ की प्रॉक्सी भारत में काम कर रही हैं, तो वो यही है वामी बौद्ध। वो भी मुट्ठी भर है, इंटरनेट में है केवल। पहले जेएनयू में थे, और जेएनयू में अर्बन नक्सल के रूप में थे, और जो है कुछ पॉकेट्स में जो है हथियार पकड़ा देते थे गरीब हिंदुओं को, बेचारों को ऐसे ही भड़का के कि तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ करके उनको हथियार पकड़ाते थे, सेनाओं के साथ लड़ते थे वो लोग, ब्लास्ट करते थे। अब सरकार की पॉलिसी की वजह से हजारों नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और जेएनयू से इनको जो है इस कचरे को निकाल दिया है, तो ये कचरा अब आ गया है इंटरनेट में। कन्हैया कुमार जैसे कुछ कचरा जो है कांग्रेस पार्टी में चला गया है। तो ये कुछ लोग हैं। तो भाई, अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ नकारात्मक और सकारात्मक एक साथ रहता ही है। जब जब भी देवता रहे तो राक्षस रहे, देवता रहे तो असुर रहे, मानव रहे तो राक्षस रहे, ठीक है। तो ये राक्षस रहेंगे, ये वैचारिक राक्षस हैं, और ये हर समय राक्षसों का यही मंशा रही है कि हम इनको खा जाएं, इनको मार दें, इनको काट डालें। लेकिन ऐसा ठीक है, हुआ नहीं, And ठीक है, अभी ठीक भी है। वैसा नहीं। हाँ, जी। another thing, they defend the asuras. Now you see, they consider Ravan to be their ideological means guru, and they consider Shukracharya, all the asur to be ideological guru. Now you think Mahishasur is their great person. Now you think who are they? अरे, कमाल तो तब हो जाता है महिषासुर को यादव कहने लगते हैं। हमने बोला यार, इससे बड़ा झूठ तो सदी का कोई हो ही नहीं सकता है। ये लोग मतलब Mata is Yadav. Durga Mata was माता, Yadav. सुनो, जिन्होंने मारा था महिषासुर को वो एक्चुअली यादवी थी, यादव कन्या थी। श्री कृष्ण की बहन थी, जो आपका डिस्टरबेंस हो रहा है सिद्धार्थ भाई, म्यूट कर लें। सिद्धार्थ भाई म्यूट करें, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है। महिषासुर को मारने वाली श्री कृष्ण भगवान के जो योग माया थी, उन्होंने उसका वध किया था, और वो यादव कन्या थी। वास्तव में वो मारने वाली यादव थी, और महिषासुर को यादव बोल के वो लोग जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। तो एजेंडा चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है ना इंसान। हाँ, ठीक है सर। आपकी यहाँ पर ये बात मैं सुन लिया। तो लेकिन सर यहाँ पर मैं ना, अभी आपने राक्षसों का बताया, ठीक है जो है कि राक्षस शुरुआत से पुराने जमाने से रहे हैं, ठीक है जो है। लेकिन सर जब जब मैं जो है किसी प्रकार के धर्म की मैं क्रिटिसिज्म करता हूँ, ठीक है जो है, सभी पर क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, ठीक है, या जो है मुस्लिम लोग है, ठीक है। तो वहां पर मैं एक और मैं गुण मैं देखा हूं मैं, मेरे मुंह से जो है ना, जो भी नास्तिक है, जो भी ना अम्बेडकर के बारे में अच्छी सी बात बोलते हैं ना, तो मेरे मुंह से अम्बेडकर के खिलाफ भी गलत बात निकल जाता है। लेकिन देखा जाता है कि नास्तिक लोग अम्बेडकर के बारे में गलत बात नहीं बोलते, तारीफ करते हैं, कितने पढ़े लिखे इंसान थे, वो ये थे, वो थे, उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ ये अम्बेडकर के खिलाफ पता भी है वो बात क्यों करता करते हूँ। हैं? तो क्या ये सिद्धार्थ भाई नास्तिकता मैं है कि बताऊं, क्या है? मैं समझ गया, बताओ। मैं आपका प्रश्न समझ गया। बताऊं, अंबेडकर जी के नाम का इस्तेमाल करेंगे तभी तो अंबेडकर जी के लिए जो इमोशनल हैं जो लोग, वो लोग उनके प्रति भी जो है सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा, वो लोग उनके झांसे में आएंगे। ये एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है। महात्मा बुद्ध का नाम लेकर और अंबेडकर के नाम की आड़ के पीछे छुपकर
तभी तो उनका एजेंडा चलेगा। उनकी पॉलिसी क्या है? 5 साल 6 साल से उन्होंने यही पॉलिसी बनाई है ना। पहले जल जंगल और जमीन के नाम पर जो है नक्सलवादी तैयार करते थे। अब ये एजेंडा जब उनका फेल हो गया और भारत में नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो उन्होंने बोला यार अब क्या करें, तो उन्होंने अपना सेट पैटर्न बदल दिया। अब उन्होंने सोचा कि यार हमको अंबेडकर के पीछे और महात्मा बुद्ध के पीछे छुप कर इन पर वार करना होगा। ठीक है, तो ये उनके नाम के पीछे छुप कर वार कर रहे हैं, इसलिए उनकी तारीफ करते हैं। और उन्होंने जो नहीं मैं किया उनके लिए वो बताते हैं। पेरियार को अंबेडकर जी ने कभी सराहा नहीं, लेकिन अंबेडकर जी और पेरियार को हमेशा जो है देशद्रोही बोलते थे और कलंक बोलते थे समाज के लिए और अभिशाप बोलते थे। आज वो उनकी आत्मा कितनी जो है दुखित हो रही होगी कि उनका नाम उस पेरियार के साथ लेकर ये लोग जो है हरकतें कर रहे हैं। नहीं, तो मैंने वो आपसे लोग बात पूछा, मैं बुराई करता हूँ ना, उसको मैं पूछा साहब, मतलब। Siddharth, listen na. हम्म, Ambedkar Sahab, Baba Sahab had taken name of 3 gurus, okay, हम्म, हम्म, and whom he considered his ideological gurus. First was your Kabir Sahab, okay. Kabir Sahab, हम्म, number 1, number 2 your Ram, Namdev. Not Namdev, what was his name? Ravidas. रविदास। Ravidas Sahab, Kabir Sahab, and Phule. अच्छा, Okay, हाँ, these people were genuine reformers of society. But अच्छा, this Periyar was not a reformer. He had a inferiority complex and a hatred for a particular caste. Okay. हाँ, So that person, we I will not actually, if even if I didn't belong to any particular caste or which he hated, I would have never supported this stupid fellow. But another thing, Vedanta, the first movement for Dalit in India had started from Vedanta Vadis only. You go and see who started Viacom movement. Narayana Guru. Narayana Guru was a Vedantic saint. He was born to a scheduled caste family, Ejawa, from Kerala. And Viacom movement started from Advaitis only. That is why I support the genuine Dalits. Okay, but I don't अच्छा, support these stupids who Periyarvadis. I don't like ठीक है, Periyarvadis. हाँ ठीक है Yes. भूप जी। अभी आपने वो क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं दिया है कि मैंने ये कहा था, मैं मुंह से अंबेडकर की भी बुराई निकलती है, जबकि नास्तिक लोग जो है ना इसका तारीफ करते हैं, अंबेडकर की बुराई मैंने दे कर दिया देता ना, हूँ तो ये, इसका तो उत्तर मैं दे क्या दिया हूँ, ना मैं कि वो नास्तिक तारीफ, हूँ मैं? सुनिए, मैं- वो तारीफ हाँ, देखिए, आप उस एजेंडावादी उन उन जो है लोगों में से नहीं हो या उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हो, आप उससे अलग हो, इसलिए आपके मुंह से तारीफ नहीं मतलब आप कई बार बुराई कर देते हो क्योंकि आपका नेचर में है, तो इसलिए कर देते हो बुराई करना। वो लोगों का एजेंडा है कि उनकी आड़ में छुपकर ही तो हिंदुओं को खंड-खंड करना है, सनातन समाज को बाँटना है। हमारे जो हरिजन लोग हैं उनको हम सनातन से दूर ले जाना है और सनातनियों के खिलाफ करना है, इसलिए वो अंबेडकर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है इसलिए सर, वो और मैं अंबेडकर की बुराई तारीफ करते हैं, वरना अंबेडकर की मन-मन में अंदर-अंदर तो उनकी बुराई करते होंगे, गालियाँ देते होंगे वो लोग। नहीं सर, मैं एक बुराई के कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। जैसे राम भद्राचार्य ने जो है ना एक बार एक पॉइंट कहा था, आरक्षण देश में गृह युद्ध ला के रहेगा। अंबेडकर ने बहुत गलत किया आरक्षण लाकर। तो मैं राम भद्राचार्य की इस बात को सपोर्ट करता हूं। अभी गृह युद्ध नहीं हुआ है, आगे चलकर गृह युद्ध हो सकता है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है कि अंबेडकर के आरक्षण की नीति के चलते गृह युद्ध हो सकता है? इस बात से सहमत है जो कि राम भद्राचार्य ने कहा था? ये बताइए सर। मैं आंशिक रूप से सहमत हूं क्योंकि अंबेडकर जी का इसमें कोई दोष नहीं। अंबेडकर जी ने केवल 10 या 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था और उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसको खत्म कर दिया जाएगा। अंबेडकर जी की ये डॉक्यूमेंटेड मंशा थी कि जब कुछ दिनों के लिए जब तक कि समाज में समानता आ जाए और थोड़ा बहुत जो है सब सिस्टम अच्छे से चलने लगे तो इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। तो अंबेडकर जी की बात मानी नहीं जा रही है।
अब लोगों ने जो है इसको राजनीतिक टूल बना लिया है, राजनीतिक हथियार बना लिया है आरक्षण को, एक पक्ष और एक विपक्ष। तो ये जो राजनेताओं ने आरक्षण का दुरुपयोग करना शुरू किया है अपने-अपने नैरेटिव के हिसाब से, वो जो है गृह युद्ध ला सकता है। अम्बेडकर जी का उसमें कोई दोष नहीं है। जी। तो Another thing किसी राजनेता I want बोलिए to I want to say something in this regard that as per Pew Research and other research that has been conducted, we have understood that even today the so-called backward classes and the scheduled caste and scheduled tribes, they are not up to the par. Okay, they are not up to the par with the general population of India. So it is important that they should get continued support in that regard because equality has not come yet, and I support that. Yeah, in the future, if the equality comes, अद्वैत जी, हाँ, उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है, आर्थिक आधार पर आरक्षण शुरू कर दीजिए आप। उसमें सभी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को ले लीजिए और जो लोग शहीद होते हैं इंडियन आर्मी में, उनको उसमें शामिल कर लीजिए। देश के लिए उत्कृष्ट काम करने वालों को भी उसी में शामिल कर लीजिए। ऐसे लोगों को आरक्षण दीजिए ना। Vivekananda. आप जाति के नाम पर, किसी First of समुदाय all, के नाम पर जो आरक्षण दे रहे हैं, वो गलत है I ना। want to, I want to clear Siddharth's वो जी very big. आपके इस विचार को कौन राजनेता फॉलो करेगा? संसद में बहस कोई करेगा इसे कि हिम्मत है किसी Listen, राजनेता में? बताइए ना। listen, Siddharth, listen. Let me continue. I have not completed my point, Siddharth. Listen, हम्म first one. Number one, the idea of Arakshan didn't originate from even your Indian government or so-called this constitution. It started from your Hindutva's main empire, Maratha Empire. Maratha Empire started the concept of reservation. It was actually Sahuji Maharaj in the then Maratha Empire, within Maratha Empire, king of Maratha Empire started your reservation system. He gave 50% reservation to the scheduled caste and scheduled tribe. So that is one takeaway. Number two. नहीं, Number वो two. रिफॉर्मेशन का सुनिए, रिफॉर्मेशन का जो है उनकी मंशा थी और समाज को बराबरी के हक में लाने की उनकी मंशा थी, इसलिए उन्होंने किया था और उसी आइडिया को अंबेडकर जी ने अडॉप्ट किया क्योंकि वो भी महाराष्ट्र से ही थे। लेकिन अंबेडकर जी उसी आइडिया को अक्षरशः अडॉप्ट करते हुए कुछ समय के लिए ही उसको रखना चाहते थे। आज की डेट में अब समय ये आ गया है कि वो समुदाय, जाति विशेष आदि से दूर हटकर आर्थिक आधार पर इसको कर दिया जाए, तो समाज में और ज़्यादा उन्नति होगी। लेकिन यदि उसको जो है जाति आधारित किया जाएगा, तो लोग पिछड़े के पिछड़े रह जाएँगे। उस जाति के जो लोग आरक्षण का लाभ उठाकर अगले पायदान में आ चुके हैं, वो अपने ही बच्चों को उसका लाभ दे रहे हैं। ठीक है? ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो सत्ता में होता है, जो चीज़ जो प्राप्त कर लेता है, विरासत में अपने बेटे को ही वो देके जाना चाहता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसी सोच की वजह से जो है जाति भेद भी आया था या भेदभाव की भावना भी हमारे समाज में आई थी और आरक्षण की वजह से जो हरिजन लोग हैं, उनके बच्चों, जो लोग आईएएस, पीसीएस बन गए, जो लोग राजनेता के बड़े ओहदे पर आ गए हैं, जो बड़े-बड़े सिस्टम में जो है ताकतवर हो गए हैं, वो Creamy अपने बच्चों को ही उस आरक्षण का लाभ दे रहे हैं, गरीबों को नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो layer. है आर्थिक आधार पर होना आवश्यक है। Another thing is that I'm being from a complete unreserved category. I believe that people who are under impoverished, etc., they should be given reservation. Swami Vivekananda said that. I follow Swami Vivekananda wholeheartedly. So Swami Vivekananda said that don't spend your money to if Brahmins are very intellectual, don't spend your money in educating them. Rather spend in those for those who are not intelligent enough. So if Brahmins consider themselves to be very intelligent, they don't need reservation in that sense. So in that sense, I believe and it's नहीं, Vivekananda's. नहीं, लेकिन विवेकानंद की बात तो बिल्कुल सही थी अद्वैत जी, लेकिन ब्राह्मण तो कुमारिल भट्ट के टाइम से ही रिजर्वेशन पा रहे हैं।
उन्होंने एक अधिकार पा लिया ले लिया था, तो उसका क्या करोगे? खैर हाँ एनीवेज, चलो आज भूप जी हमारा धार्मिक चैनल है, इतिहास के विषय में हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो सिद्धार्थ भाई, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। टेलीग्राम में आप जो है मैसेज कर देना, बात हो जाएगी और बात होके डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारे ठीक साथ है। सूरज देव जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी Bhup सूरज ji, देव जी सर, I like your neutral, I like your neutral point of view all the time. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी सूरज देव जी, स्वागत है आपका। राम राम भूप जी, राम राम अद्वैत जी। Ram Ram. राम राम, राम राम, जय जय श्री राम। बताएं सर। जय राम जय राम। भूप जी, मैंने मैंने बस 2 प्रश्न लेके आया हूँ, जो रिसेंटली ये जो क्लिप है ये रिसेंट नहीं है, बट ये जो क्लिप मेरे पास आया है ये रिसेंट है। तो जो श्री क्या है? संप्रदाय है उनका जो अभी आचार्य है राघवाचार्य जी, तो वो एक प्रवचन दे रहे थे तो वर्ण व्यवस्था को लेकर। तो वर्ण व्यवस्था हाँ को हाँ, जन्मना सिद्ध करने के लिए वो 2 आर्गुमेंट देते हैं। तो क्या? वो पहले तो कहते हाँ, वो पहले कहते हैं कि जो कर्म में कम से मानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि गीता का जो श्लोक है, चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, तो उसका विश्लेषण वो इस प्रकार करते हैं कि भगवान पहले ये बोलते हैं, ये 2 आर्गुमेंट में वो बाँटते हैं इसे। पहला आर्गुमेंट वो देते हैं कि भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, मतलब मैंने चारों वर्णों को बनाया है। तो वो इस प्रकार अर्थ लेते हैं कि क्योंकि मैंने चारों वर्णों को बनाया है, तो जब भगवान ने चारों वर्णों को बनाया, तो बनाया मतलब बाय बर्थ हो गया। ये वो पहला आर्गुमेंट देते हैं। और दूसरा एक आर्गुमेंट देते हैं जो कि मुझे लगा कि उसने पूरा खेल ही घुमा दिया। खेल घुमा दिया मतलब श्लोक का अर्थ सपोज़ था कुछ, मतलब श्लोक का अर्थ था ये, उसने पूरा अर्थ ही घुमा दिया। मतलब हम्म हम कैसे अर्थ लेते हैं कि भगवान ने चारों वर्णों को बनाया गुण और कर्म के आधार पर या उसके विभाग के अनुसार। उसने ये कहा कि भगवान ने गुण कर्म विभागशः, इसका अर्थ ये है कि वर्ण बनाने के बाद उसे हर जो वर्ण है, हर एक जो वर्ण है, उनका गुण और कर्म अलग कर दिया। तो उसने ये बताया कि गुण और कर्म के आधार पे आपका वर्ण नहीं होगा, बल्कि आप जिस वर्ण में जन्म लिए हो, उसके आधार पे आपका गुण होगा, उसके आधार पे कर्म होगा। मतलब उसने अर्थ ही अच्छा, पूरा उल्टा कर दिया। Complete हाँ, अद्वैत जी Raghavacharya. मुझे बोलने दो, हाँ, अद्वैत जी मुझे बोलने। मैं बोल रहा हूँ कि ये संस्कृत के अगर छोटे मोटे जानने वाले भी होंगे तो वो ये जान जाएंगे कि चातुर्ण वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये एक लाइन है। ठीक है, अब हाँ, इसमें मैंने 4 वर्णों का अनुभाग किया है, सृष्टि की अनुभाग। जैसे मैं बता दूं कि मैंने चैनल पे ये नियम बनाया है कि अद्वैत जी साइंस पे बात करेंगे और मैं धर्म पे बात करूंगा। तो मैंने ये नियम बनाया है, तो मैंने इस नियम की सृष्टि की है। तो अब ये नियम की सृष्टि करने का अर्थ ये थोड़ी है कि अद्वैत जी का जन्म और मेरा जन्म जो है यही हुआ है। नहीं ना, ऐसा नहीं है। भगवान ने नहीं, मया सृष्टम का मतलब वो नियम बनाया है, उन्होंने कहा है। और वर्ण कभी भी पैदा नहीं हुए। ठीक है, वर्ण जो है केवल और केवल अपने गुण और कर्मों से होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9:29 में हो जाती है। 9:29 क्या कहता है? कहता है कि समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेष्वेषु न प्रियः। मैं सब में समभाव रखता हूँ, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही मैं किसी को अत्यंत प्रेम करता हूँ। यानी समभाव की स्थिति की बात भगवत गीता कहती है। और जो परिभाषा ये दे रहे हैं इसके अनुसार तो भेदभाव हो जाएगा ना। तो भगवान ने जो समभाव में अध्याय 5 में, अध्याय 7 में और अध्याय 9 में समभाव की स्थिति पर जोर दिया है, वो पूरा का पूरा जो है उनका प्रेमाइसिस ही ध्वस्त कर रहे हैं वो पंडित जी। नंबर 1 बात। पर्टिकुलर श्लोक की अगर हम बात कर लें तो चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागसः के बात है। अगली लाइन क्या कहती है? वहां पर जाओगे तो ये बिल्कुल निश्चित हो जाएगा कि ये केवल गुण और कर्म कैसे होते हैं। गुण कर्म आपके जो जो क्या बोलते हैं, आपका जो तमस रजस सत्व,
ये 3 प्रकार के जो है आपके जो विभाग हैं शरीर के अंदर आते हैं, उसके अनुसार आपका स्वभाव बनता है। ठीक है? तो क्या पैदा होने के बाद इस बात की गारंटी है कि एक कुल में जन्म लेने वाले के अंदर सात्विक गुण ही होंगे और एक कुल में जन्म लेने के वाले के अंदर जो है तामसिक गुण ही होंगे? ये तो प्रैक्टिकली संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। हिरण्यकशिपु के पुत्र भी तो प्रहलाद थे ना, तो वो सात्विक थे। हाँ, अरे इतिहास में मैं बहुत सारे उदाहरण देने जा रहा हूँ। हिरण्यकश्यपु से पहले तो जो है रावण का उदाहरण है। उसका पिता तो जो है विशेश्वरा कितना बड़ा ऋषि थे वो। उसके बाद कंस का उदाहरण है, दुर्योधन का उदाहरण है। कितने नेगेटिव कैरेक्टर्स हुए हैं जिनके पिता या जिनका कुल बड़ा ही महान रहा है और वो राक्षसी प्रवृत्ति के रहे हैं। और कितने राक्षसी कुल के रहे हैं, राक्षसी पिता रहे, उनका पुत्र बड़ा महान रहा है। राजा वेन की कहानी सुन लो। राजा वेन जो है एक ऐसे कुल में थे जो सब भगवान विष्णु के स्वयं अंश से उत्पन्न हुआ था और उस कुल में पैदा होकर इतना आतताई और जो है दुराचारी राजा बना, जिसको जो है प्रजा ने मिलकर मारा। ठीक है? और उसके बाद जो है ऋषियों ने उसके जंघा से उसके स्टेम सेल्स लेकर उसके पुत्र का निर्माण किया और उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा बन गया। तो ये बातें जो है, जो ये कहते हैं ना, उनको कहने से पहले सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। अब एक चीज़ और है, हमारे त्रिपाठी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। अब अगर ऐसा होता तो रावण तो बड़ा तामसिक था और विभीषण बड़ा सात्विक था। ये कैसे हो गया फिर? 2 भाई अलग-अलग स्वभाव के पैदा हो गए, तो गुण और कर्म जब जन्म से होते तो स्वभाव 2 भाइयों के एक जैसे होने थे ना। ये क्यों नहीं हुए फिर? Another thing I want to say this on a logical point of view. If Bhagavan says that he had made the Chaturvarnya and he says that Chaturvarnya Maya Srishtam, that means it will be from birth. If he says I have created, that means it will be from birth. With what logic he says that? If he says that every moment he is creating the Chaturvarnya, everybody is getting birth and he is creating this Chaturvarnya, then what happens that the statement of Bhagavad Gita becomes fallible. Why? Because he is creating it all the time. And if he is creating it all the time, then what happens is that he falls into a logical error. And what is that? It will go infinite regression. It will go into anavastha dosh. Why? Because he is infinitely creating. Every time somebody is born, he is creating that dharma. That means that every time he will create a set of 4, and every jiva will be born, a set of 4 will be created, and this will lead to infinite regression. So it is not so. He has created this system, not from the birth. You tell him that it is logically not viable, this statement. अद्वैत जी, हाँ, एक चीज मैं भी रखना चाहता हूँ पॉइंट कि अगर आप भागवत पुराण को देखें और अगर आप महाभारत में भी देखें तो भृगु जो है महर्षि, तो वो एक पॉइंट रखते हैं महाभारत में कि पहले सिर्फ ब्राह्मण था और भगवान कृष्ण भागवत में भी कहते हैं कि पहले एक ही वर्ण था जो कि हंस नाम का था और फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय आते हैं और फिर ब्राह्मण से ही वैश्य शूद्र आते हैं। तो ये प्रकरण भृगु महर्षि कहते हैं, ये सबको मालूम है। ये अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो आचार्य है उनकी बात को माना जाए कि क्योंकि भगवान ने जैसे एक कॉन्सेप्ट इन लोगों का होता है ना कि बाइबल का गॉड या कुरान का गॉड ने अर्थ को बनाया, तो अगर हम वैसे देखें कि भगवान ने वर्ण व्यवस्था को बना दिया, तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो महाभारत झूठा हो जाएगा और भागवत पुराण भी झूठा हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है कि पहले तो सिर्फ ब्राह्मण था। अगर हम इस प्रकार अर्थ ले कि हाँ, जो क्षत्रिय आए, जो वैश्य आए, जो शूद्र आए, ये इसका सबका कारण ही भगवान है। बट ये समय के बाद में क्योंकि भगवान कहते और भृगु महर्षि भी कहते कि पहले सब सात्विक थे और सत्ययुग था उसकी बात।
और फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय आए, जो कि साफ-साफ सिद्ध होता है गुण और कर्म के हिसाब से ही आएगा। तो जन्म से तो नहीं होगा, वो लॉजिकल एरर हो जाएगा। देखिए तो ये भी एक सबसे पहली समस्या। बात सुनिए, सबसे पहली बात तो ब्रह्मा जी की सभी संतानें हैं, तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जो है अपनी संतानों को उन्होंने जो क्रिएट किया था सब सात्विक थे। सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों इतने सात्विक थे कि चारों एक ही बार में मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। तो ब्रह्मा जी ने उसका सॉल्यूशन भगवान विष्णु से क्षीरोद काशी विष्णु के पास जाकर लिया और उन्होंने फिर बताया कि जो है माया मोह की नदी को जो है हमें प्रवाहित करना पड़ेगा और इंद्रलोक का निर्माण हुआ और उसके बाद जो है फिर सप्त ऋषियों का निर्माण किया उन्होंने। तो सात्विक थे इसलिए सभी ब्राह्मण थे। ठीक है। अब जिससे सत्व तीनों गुण उनके अंदर विद्यमान थे, लेकिन सत्व की प्रधानता थी इसलिए सभी ब्राह्मण थे। जैसे जैसे सत्व की प्रधानता कम हुई और तमस और रजस भी अपना प्रभाव दिखाने लगा, एकदम, युग युगांतर के एकदम। बाद चारों पुरुषार्थ थे तो प्रभाव कम था उसका। जैसे जैसे पुरुषार्थ कम होते गए प्रभाव बढ़ता गया। आज कलयुग में केवल एक ही पुरुषार्थ बचा है, तो जो जो तमस है उसका प्रभाव बढ़ गया है। तो ये है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो है केवल और केवल अगर सभी ब्राह्मण थे ऐसा भी कह लिया जाए तो वो गुणों से थे और धीरे-धीरे गुणों की हीनता के बाद जो है वो सब जो है अन्य वर्णों में आते गए। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमापिपीमां विद्यात् कर्तारमव्ययम्। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार। अब बताओ इससे स्पष्ट अर्थ और क्या मिलेगा? उनसे एक संबद्ध एक गुरु जी। कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। मानव समाज के, उनको जन्म नहीं दिया गया, समाज के 4 भाग किए गए। समाज का जन्म दिया जाता है क्या? समाज बनता है लोगों से, जो अलग-अलग कुलों में, अलग-अलग वर्णों में जो है शिक्षा लेकर पारंगत होते हैं, अलग-अलग कुलों में जन्म लेते हैं, उनके समूह से समाज बनता है। और उसके बाद करें यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो इस व्यवस्था का, जब सामाजिक व्यवस्था के सृष्टा की बात हो रही है तो किसी पर्टिकुलर आदमी को जन्म देने की बात नहीं हो रही है। उस व्यवस्था को बनाने की बात हो रही है। सामाजिक व्यवस्था को एग्ज़ैक्ट बनाने की बात होगी तो किसी के जन्म देने की बात हो ही नहीं सकती है। स्पष्ट रूप से इस भगवत गीता में आपके समक्ष मैंने ये लगा दिया। अब अगर अक्षरशः अर्थ समझा जाए, चातुर्वर्ण्यम मानव समाज के 4 विभाग, चातुर्वर्ण्यम मानव समाज के 4 विभाग, मया यानी मेरे द्वारा सृष्टम मतलब उत्पन्न किए हुए हैं। तो मानव समाज के 4 विभाग, तो 4 विभाग जब समाज के होंगे तो समाज का जन्म एक साथ थोड़ी हो जाता है। तो उनको जन्म से जोड़ोगे। कभी ठीक है? तो ये जो वो व्याख्या कर रहे थे वो पंडित जी जो भी थे, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि उनकी वो व्यवस्था बनी रहे, उनके पुत्रों को उनको सत्ता मिलती रहे। जैसे टेलीविज़न पर देखो अब त्रिपाठी जी ने कितने सारे उदाहरण दे दिए। बाली और सुग्रीव, एक राक्षसी प्रवृत्ति का था, तामसिक था, एक भगवान का बड़ा भक्त था। हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज कितना बड़ा जो है आतताई था, वो भी आपके सामने अच्छा, है। जी, जी, एक और चीज़ आप हाँ, थोड़ा नोटिस कीजिए कि 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम कर्मणा वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि गुणों के अनुसार कर्म और कर्म से आपका वर्ण डिसाइड हो जाएगा। बट अगर आप ये माने कि आपको एक जगह में भगवान ने जन्म दिया और जिस वर्ण में आपको जन्म दिया, चलो मान लेते हैं, उस वर्ण के अनुसार आपका कर्म होना चाहिए। तो चलो पहला पॉइंट मान लेते हैं कि उस वर्ण के अनुसार कोई व्यक्ति अपना कर्म करेगा। अब एक पॉइंट ये आता है कि चलो एक ब्राह्मण के घर में एक बच्चा का पैदा हुआ और वो उसको ब्राह्मण के काम में लगा दिया। अब प्रश्न ये है कि चलो काम तो वो कर लेगा, क्योंकि वो एक फिज़िकल काम है तो वो कर लेगा। प्रश्न ये उठ जाता है कि क्या कोई बच्चा अपना गुण बदल सकता है ऐसे? जो उसका गुण होगा उसके आधार पे वर्ण हो सकता है, बट वो जो उनका गुण है, जो वो लेके आया है, उसके आधार पे तो वो कर नहीं सकता क्योंकि गुण को बदलना इतना ईज़ी नहीं है।
देखिए, वर्णकूट के अनुसार एक ही पिता के 4 पुत्र अलग अलग स्वभाव, अलग अलग क्षमता और मेधा के होते हैं। तो वर्णकूट का बहुत बड़ा महत्व है। वर्णकूट के अनुसार एक ब्राह्मण का बेटा जो है हो सकता है इतना सात्विक हो कि वो जो है अपने पिता से ज्यादा बड़ा पारंगत जो है धर्मात्मा बन जाए, और एक उसी का पुत्र ऐसा हो रावण जैसा, एक विभीषण जैसा हो और एक रावण जैसा हो कि वो जो है इतना बड़ा आतताई बन जाए। तो ये तो गुण कर्म से हो गया। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि जन्म से वर्ण व्यवस्था है, वो लोग भगवान के कहे हुए कथन को जो है प्रत्यक्ष रूप से झुठला रहे होते हैं। झूठा, भगवान को झूठा साबित करने का पाप कर रहे होते हैं वो लोग। Not only भगवान ने this, क्या, अगर 7, सुनिए 7:11:35, they are contradicting 7:11:35 of Srimad Bhagavad also, which is जी जी cited अद्वैत जी, in. वो तो ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं। आज हम लॉजिकली बात करते हैं। अब लॉजिक ये बताओ, भगवान ने अगर ये सृष्टि करी है 4 वर्णों की और वो जन्म से है, अगर उनके अनुसार मान लिया जाए जन्म से है, तो भगवान की ये कथन झूठा साबित हो जाता है रावण और विभीषण के उदाहरण से, बाली और सुग्रीव के उदाहरण से। कि अगर भगवान ने ऐसा कहा था तो फिर सुग्रीव को और बाली को सात्विक ही बनाना चाहिए था, या रावण और विभीषण को सात्विक ही बनाना चाहिए था। राक्षस कैसे बन गया वो? गुण तो ठीक बदल है, ना सकता है तो ना, भगवान ऐसे झूठे हो थोड़ी। गए ना यहाँ पे। सुन लीजिए, सुन हाँ, लीजिए, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिकली बता रहा हूँ। भगवान झूठे हो गए, तो भगवान को एकदम। झूठा क्यों साबित करवा रहे हो? अगर जो है इस आधार पर देखा जाए तो विश्वामित्र जो है महान ऋषि कैसे बन गए? भगवान झूठे हो गए अपने ना। स्वार्थ अपने स्वार्थ के अगर लिए ये देखा भगवान जाए को तो झूठ। परशुराम परशुराम और गुरु द्रोणाचार्य ये जो है महान योद्धा कैसे हो गए? तो भगवान भगवान को झुठला रहे हैं ये लोग ऐसा करके। अच्छा भूप जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं एक पॉइंट पे बात करूँ जो कि मुझे लगता है सबसे क्रिटिकल है। इससे भी एक पॉइंट और क्रिटिकल है कि हमारे समाज में जो ये लोग जो कुछ वर्ण को जन्म से मानते हैं, इसके लिए मतलब जितना अत्याचार हुआ है और इसके लिए जितना कन्वर्जन हुआ है, मतलब आप सब लोगों को पता है कि वर्ण को जन्म से मानने के कारण क्या क्या ना हुआ है। ठीक है ना? जो व्यक्ति ब्राह्मण था वो एक पास्टर बन जाता है और वो कन्वर्शन करते हैं। तो इतना गंदा अच्छा, एक। जी जी जी, मैं इसी बात को एक बात याद आ गई, अभी की बात है। मेरे जो है बहुत ही करीब के जानने वाले हैं वो इसी बात को लेकर क्रिश्चियंस ने चर्च में उनको झांसे में लेकर कन्वर्ट कर लिया था। मुझे पता एकदम, चला, मैंने उनको समझाया बुझाया और वो वापसी की ओर आ गए। ठीक है, लेकिन इतनी जड़ें जमा देते हैं वो लोग कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको वापस लाना। अगर मेरे संपर्क में नहीं आते तो वो वापस भी नहीं आते। भूप तो जी अब एक बात आप उनके, सोचिए। सुन लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं। तो उनके किए हुए उन कुकृत्यों की वजह से कितने लोग आज भी प्रत्यक्ष रूप से कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके बाद भी उनको केवल अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए और निजी स्वार्थ के लिए ये हरकतें बंद नहीं कर रहे हैं ये लोग। कितने बड़े सनातन धर्म के दुश्मन हैं ये। जो लोग वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानते हैं, उनसे बड़ा सनातन धर्म का घातक और शत्रु कोई नहीं है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। Number one. भूप Number जी। two, I'm saying, हाँ, Bhuvji, Suraj, listen. Number one. Number two is Nachiketa. Try to understand Nachiketa Bhav. Nachiketa says that I may be, uh, I may be inferior to some very, very nice or very, very intelligent people. But I am never the least. I'm never the worst because I am better than many. Many will be worse than I am. So this says that one should not consider oneself to be the most inferior one. Now the question is that if you consider, if the gurus consider that you will call somebody a shudra because of their birth, and they will consider what you teach them as holy and good, and consider your sons and progeny to be great without any value, or without any material actually value, then you are a fool, because nobody will do that.
they will leave the dharma that you are going to teach. Okay, that is the simple thing. You will call somebody to be inferior. Shudra means inferior, and they will consider you to be great. Stupid. If Raghavacharya says that he is a stupid fellow. भूप बिल्कुल जी बिल्कुल, ये मैं पॉइंट बहुत ही सही है जी। सूरज जी बोले। भूप जी मैं थोड़ा अपने पॉइंट को कंप्लीट कर दूं। मैं जो पहले बोला ना कि इनकी वजह से जो हमारे जो सनातन धर्म के इतिहास है, इनमें इतना गंदा एक टाइम गया था जिसके लिए आज भी कन्वर्जन होता है, जैसा आपने बताया। तो अक्सर हमारे जो लाइव होते हैं, बहुत सारे हिंदू आते हैं, एंटी हिंदू आते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुमने इतना भेदभाव किया, तुमने इतना भेदभाव किया, तो आते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है कि हम तो कर्म से बताते हैं, पर हमारे पास लेके आ जाते हैं। तो मेरा एक ही पॉइंट है कि जो लोग बैठ के बोलते हैं कि जन्म से है, उसको क्यों ये बोला नहीं जाता कि तुम्हारे जन्म के कारण जितना कन्वर्जन हुआ है, जितना भेदभाव हुआ है, उसका एक उत्तर दो। ये लोग वो उत्तर क्यों नहीं देते? उन लोगों को पड़ी नहीं है। उनके पास अगर ऐसे लेके जाते तो बोलते तुम आज जाते हो, कल जाते हो तो आज चले जाओ बाहर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, they will say openly. उनका उत्तर ये रहता है, हमने कई बार देखा है, जो जन्म से मानते हैं ना, वो बोलते हैं जिसको जाना है जाए, हमको मतलब नहीं है, भगवान के रास्ते में जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। दे आर नॉट बॉदर्ड। अगर उनको परवाह होती तो वो पहले ही चेत जाते, जब मुगलों ने और मुसलमानों ने हमारी बहन बेटियों को 2-2 दिनार में जो है नीलाम किया, उनका सामूहिक बलात्कार हुआ। अगर ये भेदभाव नहीं होता तो असीरगढ़ का किला न लूटा जाता अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर ये भेदभाव नहीं होता, मार्शल नॉन मार्शल में ना बटे होते, तो जो है चित्तौड़गढ़ ना जीता जाता अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और रानी पद्मावती को जौहर ना करना पड़ता। कितने उदाहरण है। पृथ्वीराज चौहान नहीं हारते अगर मार्शल और नॉन मार्शल के भेद फेर में न पड़े होते। जब प्रजा मिलके खड़ी हो जाती तो आक्रमणकारी की हिम्मत थी कि वो साला एक कदम भी आगे बढ़ जाता। प्रजा को तो बोल दिया तुमको तो लड़ने का अधिकार ही नहीं है। तो ये जो हुआ है, जितनी भी हमारी हारें हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं पीड़ित वर्ग को आक्रमणकारियों ने शामिल किया है अपने साथ। बौद्धों ने भी बड़ा उनका साथ दिया है, दैट इज डिफरेंट केस। लेकिन बौद्ध धर्म पैदा कैसे हुआ? इसी भेदभाव की वजह से बौद्ध धर्म पैदा हुआ। जो हम भेदभाव करते थे, महात्मा बुद्ध ने इसी से शुद्ध होकर जो है उन्होंने अपना एक विचार कायम किया था। आज जैसे कोई नाराज होके जो है दयानंद सरस्वती बन जाता है और वो आर्य समाज पैदा कर देता है। समझ रहे हो? वो तो हम लोग हैं जो महर्षि बद्री की परंपरा में आकर ये बता रहे हैं कि नहीं भैया, सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, और सनातन धर्म में कुछ नया जोड़ा या घटाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन महात्मा बुद्ध और दयानंद सरस्वती के सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, इसलिए उन लोगों को जो ठीक लगा उन्होंने नया पंथ ही बना दिया कि जाओ, तुमको फर्क नहीं पड़ता है तो हम नया बना रहे हैं, जाओ तुम। तो ये आप क्रिटिसाइज भले ही करो, हम भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनके सिद्धांत गलत हैं, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत से हटकर हैं वो लोग। लेकिन जिन परिस्थितियों में उन लोगों ने अपने आप को खड़ा किया है, वहां पर उन परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो उस समय उनके सिद्धांत को प्रतिपादित जो उन्होंने किया है वो गलत नहीं था। लोग वनरेबल थे, जहां संभावनाएं होती है लोग वहीं पर अपना जो है एजेंडा फिट करते हैं ना। उस समय उनको लगा था, जैसे आज भी लग रहा है इन वामपंथियों को, कि भैया ये बड़ी आसानी से जो है हम अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं उनको बहका के अपने में शामिल कर सकते हैं, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। तो आज भी वो कर रहे हैं। ये क्यों और वामनी बौद्ध तैयार हुए हैं, वामपंथी तैयार हुए हैं जी। प्रभु जी आप और एक चीज देखिए, जो कैसे ये लोग श्लोकों को घुमा फिरा के दिखाते हैं कि एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है कि 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, तब भगवान कहते हैं कि सबको समदृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो चांडाल हो या ब्राह्मण हो। तो कुछ नास्तिक, एक्चुअली मैं बताऊं कि ये जो आर्गुमेंट नास्तिक देते हैं, वो उसका नास्तिकों का स्वयं का इतना बौद्धिक शक्ति नहीं है कि वो सोच के आर्गुमेंट देंगे। ये जो जातिवादी आचार्य जो आर्गुमेंट देते हैं वही वो चेप देते। तो ये लोग कुछ कहते हैं कि ये जो है ना कि सबको समभाव से देखना चाहिए, ये बस पारमार्थिक के लिए है। मतलब पारमार्थिक मतलब हम मानते हैं कि एक व्यावहारिक होता है
एम्पिरिकल और एक होता है एब्सोल्यूट पारमार्थिक। तो ये अरे पारमार्थिक वो तो क्यों होता है? जलेबियां बनाते हैं, वो तो एग्जैक्टली जलेबियां ये बनाते हैं। हमको व्यवहार में नहीं करना चाहिए। व्यवहार में तो हमको ब्राह्मण और चंडाल में भेदभाव करना चाहिए। तो एक चीज आप देखिए कि उद्धव गीता जो भागवत पुराण में आते हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आपको व्यवहार में आना है, व्यवहार में उसको लाना है, आपको एक चांडाल को प्रणाम करना है। उद्धव गीता ने भगवान ने कहा तो इसको तो प्रैक्टिकल में भी लाना है ना। तो अगर प्रैक्टिकल में आप नहीं लेके आओ तो बोलने का क्या फायदा? मतलब अरे उद्धव गीता परमात्मा छोड़िए, भगवत गीता में नहीं कहा है क्या भगवान ने? उद्धव गीता तो चलो उद्धव को तो उपदेश दिया था उन्होंने, वहां पर भी तो स्वयं भगवान ने ही जो कहा था वो कहा था, लेकिन भगवत गीता में भी तो कहा ही है ना उन्होंने। उसे ये बात उसको तो, भी एक एक श्लोक को तोड़ मरोड़ के रखेंगे। अरे यार जिसको एजेंडा चलाना है, शत्रुओं से देखो, हमारे शत्रु कितने हैं? 5 शत्रु हैं वास्तव में। पहला शत्रु है मिशनरीज, जो सनातन को मिटाने के लिए काम कर रहा है। एकदम दूसरा शत्रु है इस्लाम, ठीक है, ये खुले शत्रु हैं। तीसरा शत्रु है छद्म वामपंथ, ठीक है, वो अलग अलग वेश बदल लेता है, मुखौटे अलग अलग ओढ़ लेता है, वामपंथ को पहचानना पड़ता है। 3 शत्रु तो ये हो गए। चौथा शत्रु है हमारा, जो हमारे अंदर जो ऋषि मुनि है, जो जो कलयुगी ऋषि मुनि बनकर बैठे हुए हैं और सनातन धर्म की गलत व्याख्या करते हैं। पांचवा शत्रु है जो जन्म व्यवस्था को जन्म वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानकर सनातन धर्म का बड़ा नुकसान करते आ रहे हैं सदियों से। इन 5 शत्रुओं से वैचारिक रूप से हमको युद्ध करना है, लड़ना है, ठीक है। तो ये बड़ी विडंबना है, और जब तक इन पांचों को हम काउंटर नहीं करेंगे, और एक बड़ी बात देखिए कि जन्म से वर्ण व्यवस्था और भेदभाव को ही आधार बनाकर मुसलमान हम पर आघात करते हैं, और यही जो रूट अपनाते हैं क्रिश्चियन, भेदभाव वाला, और हम पर आघात करते हैं, हमको कमजोर करते हैं, और यही रूट वामपंथी अपना रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं, उनको मसाला, उनको रास्ता, घर का गेट कौन खोल खोल रहा है? ये जातिवादी ये लोग, जातिवादी। ठीक है। तो जातिवादी लोग जो हैं, वो हमारे अंदर, किले के अंदर बैठे हुए हैं, दरवाजा खोल रहे हैं वो। और ठीक यही यही जो है आर्य समाजी भी कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। आर्य समाजी क्या करते हैं? पुराणों को नकार देते हैं और बोलते हैं कि पुराण और देवी देवता अवतार और मूर्ति पूजा ये सब बेकार है। तो इससे किसको बल मिलता है? इस्लाम को। इस्लाम को जो कंटेंट दे रहे हैं वो आर्य समाजी दे रहे हैं। बोलते देखो तुम्हारे वेदों में नहीं लिखा है, ये देखो आर्य समाज की किताबें दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो एकदम एकदम इस तरह, हाँ, तो इस तरह से जो है हम बहुत सारी विसंगतियों से घिरे हुए हैं भाई मेरे। और इसलिए हमने ये मुहिम इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि जो ज्ञान हम दे रहे हैं, आप दूर दूर तक उठा के देख लीजिए, कोई भी इस सत्य मार्ग और इस सत्य ज्ञान को देने वाला है नहीं है भारत में। आप मुझे हमारे अलावा कोई और दिखा दीजिए जो इस तरह की बात कर रहा हो जो हम करते हैं। लोग बोलेंगे कि जन्म से वर्ण व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन वो आर्य समाज की मूर्ति पूजा और इन सबको प्रमोट करेंगे, यानी सनातन धर्म की मूल भावना से दूर हट जाएंगे। लोग बोलेंगे कि भैया जो है हम भेदभाव और जातिवाद को मानते हैं, और फिर उसके बाद सनातन धर्म की रक्षा से वो मुख मोड़ लेंगे, बोलेंगे जो कन्वर्ट हो रहा है कन्वर्ट होने दो, जाने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। अभी इन लोगों से तुम क्या उम्मीद करोगे? ये 2 प्रकार के लोग हैं जो अपने आप को सनातन धर्मी बोलते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा बड़ी बड़ी गुद्दियों में बैठे हुए हैं। हम ही लोग तो हैं जिनको देखने वाले कितने हैं। For सोचिए that, कि उन लोग, जी, for that, Devi Bhagavat has clearly said that in Satya Yuga, the Rakshasas and Asuras will be born with Janayu, and these will actually destroy the dharma. And okay, this is for those people. Clearly, Devi Bhagavat says that. Yes, Babu. अद्वैत जी, एकदम ये कमेंट आया है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दो। क्रिश्चियनिटी का कुछ बताना चाह रहे हैं इजाकेल। Ezekiel. Wait, let me see what is the comment. 4.12 से 15। चलो अगर आप कुछ खा रहे हो तो मैं निकाल देता हूँ। Actually, I am eating. हाँ ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। भोग जी
गुरुजी मैं एक 2 पॉइंट रखूँगा कि हाँ, आपको रख पता लीजिए। नहीं सोच भी नहीं पाओगे कि मैंने तो बहुत किया है ये सब। मैंने हमारे चैनलों में हमने क्रिश्चियनों के जो टेलीग्राम अकाउंट होते हैं ना, उनको पूरा दिखाया है कि और हमने भी खुद देखा है कि हम जब उनके लाइब्रेरी सेक्शन में जाते हैं, तो पता है क्या मिलता है? ये कुछ मिलता है कि सारा का सारा आर्य समाजियों का किताब, जहाँ पर आर्य समाज ने अवतारवाद के खिलाफ लिखा है, मूर्ति पूजा के खिलाफ लिखा है, भगवद गीता के खिलाफ लिखा है। और क्रिश्चियन इतने आलसी होते हैं कि वो जो रेफरेंस उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है आर्य समाज की किताबों से, वो उस रेफरेंस को असली जो किताब होते हैं उसको स्क्रीनशॉट लेके वीडियोज़ में नहीं दिखाते। वो तो आर्य समाज की किताब का ही स्क्रीनशॉट लेके दिखा देते हैं, जहाँ पर श्लोक गलत होते हैं, रेफरेंस गलत होता है, कोई ऐसा ग्रंथ उठा के कोट कर देते हैं जो कि सनातन का ग्रंथ ही नहीं है ना? मतलब ये लोग हम आप समझिए कि हमारे आदमियों ने हमको कितना खाया है पीछे-पीछे रह के। जी, जी, जी। बिल्कुल सत्य है, सत्य है। अच्छा, ये रहा एग्ज़ाम्पल 4.12 to 15। Eat the food as you would a loaf of barley bread. Bake it in the sight of the people, using human extremist for fuel. बाप रे बाप। The Lord said, in this way, the people of Israel will eat the field food among the nation where I will drive them. That is the thing. It is interpreted in this way, basically, that in terms of when there is a situation that you cannot, there is a means apatkalin, okay, apatkalin situation when you will not have anything, then you can use if you don't even have a cow dung, then you can use human faces and burn, means as the cow dung you can burn it. Okay, this is dung cake. This is a case of extreme desperation when you don't have any other means to do something. नहीं अद्वैत जी, एक्सट्रीम डेस्परेशन में भी ये खाना तो अनुचित ही है ना यार। No, खाना ये नहीं. तो It is used as you bake like अरे cow बेक dung. नहीं, शरीर में लपेटना भी है ना, वो भी तो है उनके अंदर। वो हिंदी वाले वर्जन में शरीर में लपेटना भी है। मैं हिंदी का वर्जन दिखाता हूँ, मेरे पास बाइबल्स है, ठीक है। Bake it in the इज़ाकेल sight तो of the people using human excrement for fuel. हाँ ठीक है, Okay. वो भी गलत ही है ना, वो भी गलत है ना, अनहाइजीनिक है, गलत है। But in terms of extreme desperation, when you don't have something, okay, that is the thing. जी जी। अच्छा, मैं अभी जो है इसको उससे दिखाता हूँ। बाइबल ओरिजिनल बुक्स है मेरे पास, उसमें से वो हिंदी का वर्जन है मेरे पास। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, शरीर में लपेटना, उसको प्रयोग करना, सब गंदगी का जो है, अनहाइजीन का जो है प्रमाण है ना, बहुत ज्यादा। Miss, and this is actually this has been classified in this way. The people of Israel will eat defiled food among the nation where I will drive them. So in this, it is said that God will send people, the Jews, to those people, those places where they will have lack of resources and they will eat this kind of food in desperation. That is the thing that is missing. अच्छा अच्छा। नहीं, वो पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना, तो वो लड़ाई की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इजाबेल को हिंदी में कुछ और बोलते हैं क्या? Ezekiel is a prophet, na? He was a prophet. एग्जा है लिखा हुआ है हिंदी में। Ezekiel was a prophet. एजकेल, एजकेल नहीं, यही होगा, एग्जा। ठीक है, देखता हूँ जरा, 6:26 में है। और मैं अद्वैत जी को भी कहूँगा, भूप जी को भी कहूँगा कि आप एक चीज़ देखिए कि जो आज का प्रेज़ेंट जो आचार्य जो भी हो, वो गीता का श्लोकों का कुछ भी व्याख्या दे, अगर हम आदि शंकराचार्य को भी देखें,
तो वो 4.13 में तो वैसा कुछ व्याख्या नहीं देते, जैसे कि ये लोग एक व्याख्या देते हैं कि जब गुण-कर्म की बात आए, तो पिछले जन्म की गुण-कर्म, तो ऐसे तो व्याख्या रामानुजाचार्य एटलीस्ट उस श्लोक में नहीं देते। 13वें श्लोक में, और आदि शंकराचार्य तो भी 13वें श्लोक में नहीं देते। तो अगर ये होता भी, तो उस श्लोक में इतना अच्छा व्याख्या हो सकता था, जन्म से सिद्ध कर सकते थे दोनों बड़े आचार्य। वो क्यों अपॉर्च्युनिटी दोनों ही छोड़ दिए? क्या अपने शिष्यों के लिए छोड़ दिए? तो वो एक हो सकते हैं जो आज वो लोग कर रहे हैं, बट See, ये बहुत ही सुनने में घातक लगता है। these are the problems, na? They want to make it a family business, and that is why they are interpreting the text in this way. Otherwise, they would have told, Krishna would have told that I have created the all the four burners on the basis of birth, finished. On the basis of birth on a particular pool, finished. Why to make this kind of statement then? The problem अद्वैत is जी, that अगर आप even भगवान, हाँ, Shruti Pramana, listen, even Shruti Pramana goes against them, that they don't define Brahmin by the body, by a family, by race, by skin color. Vajrashuchi Upanishad is there. It is a Shruti. Specifically, that deals with what is the definition of a Brahmin. कितनी बार हमने रेफरेंस देकर उदाहरण देकर बोला है, वो लोग हमारी बात थोड़ी मानेंगे। वो कुतर्क कर रहे हैं, तो जहां से वो कुतर्क कर रहे हैं उसका जवाब तो वहीं छुपा हुआ है ना, कि चातुर्वर्ण्य सिस्टम में कहीं भी जन्म से नहीं है। वो हमने उत्तर दे दिया। बाकी उसके सपोर्ट में कितने सारे सबूत शास्त्रों से हमारे पास है। कोई किसी की हिम्मत है जो हमसे बात कर सके? वो नहीं करेंगे। और जो जानकार लोग हैं अद्वैत उनसे जी, बात नहीं सबसे बड़े करेंगे। प्रमाण, अब अकेले में बैठ के इस तरह की डींगे हाँकेंगे बस। सबसे बड़े प्रमाण तो भगवान शंकर ने भी कहा है कि ना योनि, महाभारत में कहा है कि जन्म से वर्ण नहीं होता। योनि तो वहां पर भी, अगर ना योनि, जन्म से नहीं होता वर्ण, तो भगवान शंकर ने कहा कि वृत्ति से होता है। वृत्ति मतलब आचरण। ये गीता प्रेस के ट्रांसलेशन में भी वो सही ट्रांसलेट किया है। जितनी भी Okay. विवेक देवरा देखी उसने भी किया है, तो जन्म से नहीं होता बाय बर्थ। त्रिपाठी जी विदा चाह रहे हैं हमसे, क्योंकि उनको नींद आ रही होगी। तो त्रिपाठी जी, शुभ रात्रि आपको। और हमें लगता है कि अब हमें भी जो है समापन करना चाहिए, क्योंकि सूरज देव के साथ काफी देर हो गई बात करते हुए, और 2 बज गया। तो 2 बजे तक का ही हमारी समय सीमा रहती है। हालांकि दर्शक अब आए हैं, अधिकतम दर्शक 23-24 अब आए हैं। यदि आप सभी दर्शकों में से कोई जुड़ना चाहे, बात करना चाहे, तो 5 मिनट के लिए मैं रुका हुआ हूँ। यदि किसी को कोई चर्चा करनी है तो 10-15 मिनट और बात की जा सकती है। अन्यथा फिर अब जो है स्ट्रीम का समापन किया जाएगा आज। तो दर्शकों, जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कोई अगर बात करना चाहे, कोई किसी तरह से प्रश्न करना चाहे, कोई शंका का समाधान करना चाहे, या अपने विचार रखना चाहे, तो उसका स्वागत है। आ सकते हैं आप। जी सूरज जी, आप कुछ कह रहे थे। And another एकदम thing, मतलब, you have हाँ, told, okay, Suraj, just a minute. You have told Rijuta that you will be taking a stream on Dhurandhar, right? हाँ हाँ, करेंगे हम। वो शायद फ्राइडे को करेंगे। अच्छा दर्शकों, कल भी हम स्ट्रीम करेंगे। कल हम कुछ मलेच्छों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो कल भी आप 9:30 बजे आप सभी आमंत्रित हैं। आप सभी आ जाइएगा, जितने लोग भी सुन रहे हैं। ये याद कल या रखें, कल 9:30 बजे हम स्ट्रीम कर रहे हैं। ठीक है। कल will be Thursday, ना? It will be Thursday. हाँ, Tomorrow will be कल Friday. थर्सडे है। कल हम स्ट्रीम करेंगे, और फिर फ्राइडे को भी हम स्ट्रीम करेंगे, क्योंकि रिजिता फ्राइडे को स्ट्रीम करेगी। लेकिन कल का स्ट्रीम आप सबको ज्वाइन करना है। आप सभी लोग जो है बिल्कुल अधिक से अधिक जो है लाइक शेयर भी करें और ज्वाइन भी करें। कल की स्ट्रीम में हम उन बातों का जवाब देंगे। हनुमान जी और उनकी माता अंजना के विषय में बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों का पर पहले भी हम उत्तर दे चुके हैं, लेकिन अब पूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगाएंगे सभी प्रश्नों के उत्तरों पर। तो माता अंजना और हनुमान जी के जन्म की कथा
और माता अंजना और पूर्व में जब वो अप्सरा थी, उन सब विषयों को लेकर कल हम उत्तर देंगे, जवाब देंगे। तो आप सभी लोग उपस्थित रहें कल की स्ट्रीम में। तो जो है तब तक के लिए आप सभी को अब शुभ रात्रि कहने का समय आ गया है। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भूप जी अभी नींद तो नहीं आ रही है, परंतु अब जाना चाहता हूँ। ठीक है आप त्रिपाठी जी, आप शुभ रात्रि। आप जाना चाह रहे हैं, हम भी अब समापन की ओर ही हैं। कोई अगर जुड़ना चाह रहा है तो उसके लिए 1-2 मिनट रुके हुए हैं, अदरवाइज हम आज की स्ट्रीम को जो है It is not अब Srishtam. Acha, you have done it wrong. It is Srishtam. Sri. श्रेष्ठम Not श्रेष्ठम दिखाया तो था मैंने, भगवत it is गीता में लिखा हुआ दिखाया था। it is not Sreshta. It is Srishta. Srishta is different. Sreshta is different words. जी जी जी, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। Srishta. It is not Sreshta. Bhuvji, I want to show him. He has got a confusion on this. हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ अद्वैत जी, मैं दिखा रहा हूँ। भगवत गीता मेरे पास खुली हुई है ना। 4:13. Chart there. हाँ हाँ हाँ, दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड रुको। Sir. अच्छा भूप जी और एक प्रश्न आता है कि ये लोग जो जन्म से क्लेम करते हैं, ये लोग महाभारत और भगवान श्री कृष्ण को भी मान ले, तो हमने तो दिखा दिया कि भाई गुणकर्म है श्लोक में। ये कोई ऐसा श्लोक क्यों नहीं लेके आ पाते हैं कि जहाँ पर ये कहा गया हो These are कि जानते हो। all, listen, these are all followers of Kumaril Bhatt. Okay. ये देखिए श्रेष्ठम लिखा हुआ है, दिख रहा है अद्वैत जी? हाँ, this is Srishtam. ये श्रेष्ठम लिखा हुआ है। It is not Shreshtam. Shreshtam and Srishtam are different words. Shreshtam is श्रेष्ठ यानी कि रचना की है, मैंने बनाया है। जैसे मैं कोई नियम बनाऊं, अपना चैनल है, अपने चैनल के लिए, अपने किसी संगठन के लिए मैं कोई नियम बना दूं कि भाई आज के बाद ये काम ये देखेगा, ये काम ये देखेगा, तो वो नियम बनाना, सृष्ट करना, सृष्ट उस परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है। Srija. For example, Srija. ठीक है, Srija means what? हाँ, create. सृजन करना, बनाना। That's one Srishtam. हाँ हाँ Srishtam. जी जी। तो ये था। चलिए दर्शकों, अभी आज के लिए फिर आप सबसे मैं विदा चाहता हूँ। आज की स्ट्रीम काफ़ी अच्छी रही, आप सबने अधिक जो है समय तक हमारा साथ दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करने वाला हूँ, इसलिए आप कल का एपिसोड बिल्कुल मिस ना करें। DNA. और आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ आप सबको शुभ रात्रि कहते हुए आज की स्ट्रीम का समापन कर रहा हूं। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। जिन लोगों ने देखा उनका धन्यवाद, जो बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय